So how we will go about with our today's program would be, first, we'll understand what is the challenges, changes that are happening in a child who's transitioning from childhood to adolescence age. Then, second, we will take up ma'am's experience, Dr. Fazana's experience and her journey. Then we'll have multimedia people, Mr. Rakesh, their director, who will talk about job opportunities and what are the future vocational courses and what are the different professionals, because they help in making children, training them with various multimedia opportunities. So, what is their experience and how many children they have been able to train, make them independent? What are the different courses that are available according to the skills of a child? So they'll talk about that, and then we'll have a multidisciplinary panel where we'll have our behavior specialist, our speech and language pathologist, our occupational therapist, and special educator. We'll ask them questions as to how and in what ways they can be supportive, or how they participate when the child is growing and entering a teenage. Early intervention, we know they do all kinds of therapies, and but what is their role when they transition? How much is the need? What are the areas where a child may still require help and how they can help? That is the last panel we'll have, and then we'll be free to take up lunch. We'll also have sandwiches and tea in case anyone is hungry and wants to have a cup of tea. Please feel free to walk and have a bite while you are listening to the talks. Okay, so let us start with childhood to adolescence, transitional challenges. So, yeah. So, a few years back, I read this small snippet in a newspaper in Mumbai. It was in Mumbai newspaper where an autism teen goes missing. Inquiry was held against the police officer who had forced him to board a train. And after a couple of days, he was seen in a CCTV camera where they found him asking for food and he was kind of lost. And his parents were trying to search for him everywhere, where this news got posted in the newspaper. And it was so devastating and it was so shocking to see that something like this can happen. And what is it that we went missing? What is it that we were not aware of? What else we could have done to prevent this? Any accident that happens at any stage, we need to think and think again what we can change so that we can prevent something like that to happen. And also the science, the scientific research that they have published across, they give somewhere 49% of the children, they have a tendency to elope after 4 to 6 years of age. They like to wander. A lot of time we find parents going after them and being very protective, always following them so that they don't go in a place, in a space which is unsafe. So what could be the need for that? Sometimes they are not able to respond to when we are calling them. They will not respond, unable to respond to the rescuer. They like to go and explore. They like to be in their own zone. They like to wander around. So that is why also they tend to forget where we are and where we are heading for. They have very little fear at times to engage in high risk situations. So they are happy and all right and comfortable to take up risk because there is no fear of being lost. There's no fear of separation sometimes. But can we teach all these things to our children way before they head into something which can get dangerous? This is what we need to think of. So that is why I've put up this as the first slide, that we need to prevent certain accidents which, as per the experiences of the other people, are known and expected to happen. And what more we can do? What we can do is we can understand what is a teenage, what is adolescence, how they are going to change, how their emotional, mental changes are going to happen, and how it is going to impact. So first thing is, let us understand what is a teenage. Definition क्या है? किस एज को हम बोलते हैं teenager? किस एज में बच्चे को हम बोलते हैं ये adolescent है? So adolescence is 10 to 19 years, youth 15 to 24 years. ये पीरियड हर बच्चे की लाइफ का, इररिस्पेक्टिव ऑटिज्म है या नहीं है, हर इंडिविजुअल के लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है.
And you won't believe that it's such a high number in our country. 22% of our population is of adolescents. So we are the country which has maximum adolescents and teenagers in our country. So one in every sixth person in India is a teenager or an adolescent. So it's extremely important that we talk about them, the changes, the mental changes, the physical changes that they undergo. And 16%, 16% of them can have mental health concerns. There is a huge global burden of neurodiversity, mental health conditions that are there. Hence, it's very important that we know what changes we will expect. So, what do we expect in adolescence? So, as the brain is releasing various hormones, there are hormonal changes happening. We don't have to go into really the nitty gritty and names of the hormones, but we need to know that as the child is entering their teenage or adolescence, their body starts releasing some hormones which are different, and then those hormones do impact their sex organs and release specific hormones which ultimately lead to changes in their physical changes, emotional, mental changes. So girls and boys have these physical changes where girls begin puberty between 8 to 13 years. First pubertal change is breast development, and it is all right to talk about this with your teenager when they are entering that age group. Informing them in advance can save them the stress, fear, and anxiety of experiencing that change when it happens. So, talking about it, informing them, educating them is very important. Second, pubic hair development happens. So, if they know they are going to have some change around that body part, they will be emotionally settled, anxiety will be way less. 40% of our individuals or children on autism have very high anxiety levels. Very, very high anxiety levels. So, anything that can trigger their anxiety, we need to prevent. So how do we do that? We teach them, we give them knowledge, we educate them about the changes. Similarly, in boys, they have their puberty starting. It's a little later than girls, but it starts from 9.5 to 14 years. Then there's enlargement of the testicles, then enlargement of the penis. But we need to, again, we can't be scared or feel shy from talking about it. अगर parent ही shy हो जाएगा और inform नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, तो how and where will the child go and get this knowledge from? They may end up searching on internet or on Google, and they may not be able to fetch the right information because the sources are not confirmed sources, and they may land up into places or sites which are not age appropriate, right? So it's important that we first leave behind our shyness to talk about these changes, and we inform, educate our children that this is going to happen, this happens to everybody even when they're small. They say sexuality education can start as early as 2 years. When the child starts identifying, I am a boy, my didi is a girl, mama is a girl, papa is a boy. This is what is sexuality education. And the parents, the child, it starts talking about it in such a young age. So we can't stop it there. We do need to inform them. Yes, it's all right. What are the changes? External changes you can talk about in early years. As you gradually progress to tell them what is expected in their bodies when they are growing up. So you can use, this is a Tanner stage, but this is also a very good pictorial method to teach the child or to explain them what is changing and how is it changing in their body. If you're not able to use the right language or words, you can use picture charts and such pictures to explain them how their body is going to change over the next few years. Then comes, these hormonal changes do impact their emotions and how the child is feeling. So what happens in teenage? They can become judgmental. They will be very high on energy, self-control, poor attention span. They can be opinionated, more opinionated. These are typically what we see changes in adolescence. And similar things are going to happen. We are also going to talk about how changes are happening in autism, but these are what changes typically happen. They will become more emotional, rebellious, very sensitive,
mood swings will be there, very self-conscious, body aware, will stand in front of the mirror for long hours to see how they look. Body image consciousness, awareness ho jata hai, and their logical thinking will start getting better and more. So now how these features affect our children on autism. So same adolescence is hitting them also. What are we expecting? What is going to happen? So mostly what happens is as they're growing up physically, they become more and more functionally or they improve in their adaptive skills like self-help skills, taking bath, taking a shower, washing, getting ready for school, and those kinds, self-help, eating themselves, and dressing, undressing, all those things, basic things, they tend to improve there faster. But there may be a lot of comorbid behavioral symptoms that may be uh, present sometimes, and symptoms, some comorbidities like hyperactivity. The child used to be very hyperactive when he was small, but by the time he enters teenage, that hyperactivity will come down a bit. But there can be little irritability, repetitive behaviors, the cycle that they would use to spin, to flap their hands, they may tend to come down. Even repetitive behaviors would tend to come down because by then they have exposure to a lot of things, variety of things around them. And there will be definitely improvement in their daily life skills. What happens to social functioning, cognitive abilities, and language skills? There are variable outcomes. Again, all these depends on their intellectual ability. वो कितने intelligent हैं, साथ में उनका intelligence कैसा है, उसके ऊपर बहुत depend करता है how they are going to learn all these skills. So they may have problems making friendships. They may mistake social cues. They may not be able to social pragmatics जो हम कहते हैं, socially purposeful use of language करने में problem हो सकती है. Social cues, body language के छोटा छोटा एक हम कहते हैं एक नजर का इशारा काफी होता है teenagers को. They exchange glances and they know what is happening. So that kind of fine tuned जो body language के interpretation होते हैं वो उसको misinterpret कर सकते हैं. And there is more chance that they will land up because there is a need for them to socialize, there's a need for them to make friends, to talk to people, so they may land up in online friendships, which again can become dangerous, and we need to supervise that aspect because there they don't have to make an eye contact, don't have to sit across another person, and sometimes they also start realizing on their own that I am a bit different, I am not fitting in, which can also become a cause of increasing emotional burden and stress. Inflexibility, rigidity in thought, ऐसा ही करना है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो it is disturbing me. Sometimes they can push across this idea. Sleep problems can be there. Anyways, in teenage, the sleep cycle goes a little haywire. Children tend to stay awake for longer hours. So that also impacts our children and individuals on autism. So there also we have to be watchful that they are not having too many sleep problems. And certain mental health conditions that can coexist are there are a lot of list of them. 70% of children on autism have at least one additional diagnosis in their adolescence and teenage. So there can be anxiety, depression, there can be OCDs. So there are a lot of coexisting mental health challenges that can be there, which at times may need medical support also. So if you're not understanding what to do, you think they are going overboard, क्या करना है, हम नहीं manage कर पा रहे हैं. In that situation, it's all right to seek medical support because वो थोड़ी देर के लिए उस crisis को nip कर सकता है medication. And then the child can be taught and intervene back to come into that situation. आप हम सब में से डिप्रेशन तो किसी को भी हो सकता है ना. तो सिमिलरली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों को भी एडोलेसेंस में और सब ऑल ओवर जितना भी आप डेटा निकालेंगे एडोलेसेंस में ही डिप्रेशन की स्टार्टिंग होती है. So similarly, if we look at our children or individuals on autism, they can also have depression, they can also have anxiety, they can also have obsessive compulsive disorder, OCDs. But if we help and treat those challenges with medications when needed, seek support, reach out to the doctor, then probably the intensity and magnitude of the problem will get reduced. So that is our main focus, that we have to be alert, aware that these challenges can come. They may come and we can address them. Right?
Yes, yes. The next slide says that after this का chance बढ़ जाता है, there's a higher incidence. Again, if we know that this comorbidity may come and we are aware that this can happen, then it won't be too much of a shock. You may at times be prepared. Okay, first aid क्या कर सकते हैं हम सीजर के लिए? बच्चे को साइड टर्न देना है, लेग रेज करना है. Seizure is never like. My son got seizure 2 months back. He never had seizure after that. Yeah. So first unprovoked seizure को. What happened? So first unprovoked seizure को generally कोई भी treat नहीं करता है with long term anti-epileptics. What generally is done is the child is monitored and looked after. They are watched कि अगर second episode आता है तो फिर detailed investigations करके उसका treatment किया जाता है. First single unprovoked episode is generally not treated with anti-epileptic drugs. But yes, even if it is there and you record, if you are घर में किसी के पास है रिकॉर्ड कर सकते हो न्यूरोलॉजिस्ट के साथ बाद में शेयर करने में आसानी होती है कि whether this was a something stereotypic behavior था. Doctor started medicine after first seizure. So they must have investigated, na? And so many problems I am facing till now after getting medicine. So he is hyperactive, not. So they must have investigated, ना EG किया होगा. Yes. तो उसमें अगर clues होता है and उसमें they find something, then also they have reasons. So there are various indications to start anti-epileptic drugs, which the neurologist will take up कि क्यों लेना है और कब लेना है. पर अगर first episode है unprovoked है कुछ EG में भी कुछ नहीं आता है तो generally you don't treat, you watch, wait and watch. But yes, the incidence and chances of a adolescent or a teenager on ASD to have a seizure episode is close to 20% times higher than a neurotypical set of individual, right? So और जो हम changes expect करते हैं या autism spectrum में difficulties experience करते हैं, those are around executive skills. Execution मतलब now you plan that you have to come to this workshop. You planned in your mind, okay, this is the time I leave my home. You got yourself ready. You booked a cab or took out the keys, drove down and reached here. And now you're attending. So you planned for it. You organized yourself, your time, yourself completely around it, and you executed the task. So ये जो circuit है planning, organization, execution का, this circuit they face challenges at planning level, at organization level, and then at execution level. So this is where we need to help them. We need to teach them, train them on a regular basis to be able to follow this circuit and cycle adequately and properly. Again, the sensory issues, they can be there. They may have reduced in the early childhood, but in teenage they can pop up again. They don't want, sometimes they'll experience, oh, I don't want a haircut. I don't want to wear this t-shirt जिसमें tag लगा हुआ है. It hurts me. I want to remove my shoes and walk barefoot. And in females, girls, where they start menstruating, they start using pads, they are sensorily so uncomfortable that they are not willing to. Or they become so irritable during their periods days because they are not able to express, but sensorily they are uncomfortable using them. So an autism girl can experience those kinds of challenges, but if you don't know about it, you will not be able to help them or be able to find out मेरे बच्चे के behavior क्यों increase हो गए. Suddenly, why she's more aggressive and irritable during these days? One, she has pain, she's uncomfortable. Second, she has to put a pad in, and she's probably wet. She does not like the sensation of being wet. So if we train them, teach them, tell them all this information in advance, then probably that challenge of experiencing those days will be less. We can also sometimes give them a pain score chart. I'll show you how it looks like. So we need to do sexuality education for our child, covering all the pubertal changes, personal hygiene, social skills, contraception, sexual behavior, right, wrong क्या होता है, और जो उनके cognitive understanding level के अनुसार appropriate information है. Not as per their chronological age. मतलब अगर वो 14 साल का है तो उसको 14 साल की information नहीं देनी है. अगर उसका mental understanding का age 10 years है तो ये 10 years वाली आपको information at least उनको देनी है जो वो cognitively मतलब अपने दिमाग से अपने problem solving skills से understand करे. बाकी information को आप और decipher करोगे to a basic level using picture tools, visual cards, and then teach them what can be done. ठीक है? So उनके
abilities के हिसाब से हमको information देना है. And in girls we need to be very very careful about abuse, about pregnancy, and in both boys and girls about abuse and acquisition of sexual deviancy. बहुत बार ये सारी चीजों के लिए हमें prepared रहना पड़ता है. We have to know so that we can prevent such challenges. Inclusion in school is important, and we can talk about it because now our country, as per RPWD Act 2016, has certain percentage of children who has to be included and provided inclusion. Inclusion is diagram में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि what inclusion is. You can see the dots. Exclusion is all children with special needs are outside the neurotypical environment. Segregation is हाँ स्कूल में ये neurotypical चल रहा है, यहाँ पे special need group चल रहा है साइड में, उसी स्कूल में एक विंग है. एंड तीसरा है इंटीग्रेशन कि हाँ कुछ समय के लिए they get mixed up and sometimes, and complete inclusion is where they're sitting throughout their session in the class. So based on the need of the child, ability of the child, how much can be executed, all these stages are followed. पर हमारा ultimate motive होता है कि हम inclusion तक ले जाएं. There even segregation and integration models work very well sometimes for children, but it's not necessary. It's based on their abilities, based on the severity of the challenges. We don't want to say कि नहीं inclusion ही होना चाहिए हमेशा. हमको step करना है slowly in that direction, because the challenges may be different for every child, right? So what happens is the teenagers, they will need help in their homework and daily activities. Frequent parent school communication होना चाहिए. जब आपका बच्चा teenage में है तो बार-बार आपको टीचर के साथ communicate करना है. More frequency has to be more than what it is in typical parent-teacher meetings. उससे ज़्यादा frequent communication होना चाहिए. And teachers must check at the assignments so that they can tell them this is incomplete, let's do this. Repeated reminders and prompting will help them. They will be able to do it. Constant routine or schedules maintain karna and self-advocacy promote karna. I am extremely happy that ma'am has come here today because and I asked another parent of mine to send a small video. मैंने आपसे discuss भी किया था. But there somewhere the father refused that I don't want to come up and disclose the fact that my child is on autism, despite them both being doctors and highly trained professionals. But somewhere that glitch, that little thing is still there to hold back. So हमें advocacy करनी है. जब हम बात करेंगे, advocate करेंगे और individuals जो successful हैं autism, उनकी बातें सुनेंगे, उनको successful होते हुए देखेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस और इंक्लूजन और अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगा सोसाइटी में. एंड नो वन विल थिंक एज इफ देयर इज समथिंग डिफरेंट. जैसे ये विशाल बैठे हुए हैं, ये डिफरेंट है मेरे से, ही हैज अ डिफरेंट पर्सनालिटी देन मी, बट वी आर ऑल सिटिंग इन दिस रूम एंड नन ऑफ यू फाइंड कि ये कुछ अलग है मेरे से. तो अलग तो दो लोग रहेंगे ही ना. नो टू पीपल कैन बी सिमिलर. सो द वर्ल्ड इज लाइक दैट. एवरीबडी इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. What we need to understand is to be able to accept them the way they are, right? And वो change सबसे ज़्यादा parents से शुरू होता है, घर से शुरू होता है, family से शुरू होता है. The moment a family becomes accepting that I am okay with the way my child is, I'm absolutely fine, the world will start accepting it. There will be no one who will call your child different. The world will start accepting it. पहले आप अंदर से पूरा accept कर लो. ठीक है. एंड देन प्रिपेयरिंग फॉर द बॉडी चेंजेस, प्यूबर्टल चेंजेस. ये कुछ रिसोर्सेज हैं, इनको भी आप देख सकते हैं. वेरी गुड रिसोर्सेज जिनको आप देख के डिटेल जानकारी ले सकते हो एज टू हाउ टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर प्यूबर्टी. समथिंग लाइक दिस, ग्रूमिंग, पर्सनल हाइजीन के लिए पिक्चर चार्ट्स आप लगा सकते हैं टू टीच देम, ट्रेन देम. बहुत बेसिक चीजें जैसे शेविंग का भी पिक्चर चार्ट आप लगा सकते हैं. व्हेन योर चाइल्ड इज अ टीनेजर 17, 18 years, you want him to start learning to shave his beard, then how you can put up a picture chart in the washroom as to what are the steps that he needs to follow. So that helps them somewhere. And once they follow those steps, after some time they don't need that picture chart also because they know what to do. So similarly, you can use multiple picture charts to get them. During menstruation, especially in girls, use such a pain score where the child may not be able to really express their emotionally that they are uncomfortable or in pain. They can ask them, आप कौन सी स्माइली
आप feel कर रहे हो, you know, they can use this pain score and they can tell you, and based on that, if the child is literally feeling a lot of pain, they can be given a medication to relieve the pain and the child will be fine, comfortable. So that's what we want. Communication has to happen, and how we can help them if they are not able to say things or express or are not able to convert their feelings into words, how we can help them. And then we need to also teach them public versus private. What can be done in public places, what is to be done in private. What is a private environment? Okay, it's our bedroom, it's our washroom, it's our home environment, which is very private, where others are not allowed to enter. A lot of times, even you will experience that children, what they would do is they will say, I'm going to washroom, and they'll not want you to come in the washroom with them, because they started understanding that it's a private space, and I can't go when you are going to the washroom. You can't also go when I am going. So उनको कहीं ना कहीं understanding is coming, but we need to help them further by educating them. Good touch, bad touch के बारे में बताना है, strangers and secrets के बारे में बताना है. What are strangers, who cannot touch you, where they cannot touch you, and if it happens, you need to come and inform. Just like any other child, we have to also educate our child on autism about all these things, because the risk of abuse is way higher. So we need to prevent that. And always have the child line number on your phone ready, because 1098 child line is all over India's number where you can report an abuse, right? And they act on it. It's not just a number, they do act on it. So multidisciplinary management is important. Medical management का भी रोल है teenagers में, adolescents में. Family therapy का भी है. Therapeutic services family का, पूरी family का रोल है. It's not just कि एक OT सब कर देगा, एक educator सब कर देगा, या doctor सब कर देगा. नहीं, it's the family. It's the family which is the main place जहाँ पे सब कुछ होगा. And therapists or professionals are there to help you, guide you wherever you need it, right? So all these can be done. 49% of children are known for elopement and wandering. So what can be done? We can be ready. If we know that there is a tendency for our child to just run away, wherever there is a need, we can set up a security system in our windows and doors. There are all kinds of technical security systems. If you think that you don't have enough manpower or family members in the house, आप door locks में alarms लगा सकते हो, window locks में alarms लगा सकते हो, आप digital locks लगा सकते हो, and you can do all kinds of things to have set up a system. The moment the child will open the door, the alarm will shoot up, and you will know that the child is trying to walk out, right? Similarly, you can use the GPS bands for your children. You can always find where their location is. That is extremely useful method to track, to be able to track them if you feel that they have a tendency to escape whenever they get a chance. So आप उसको prevent कर सकते हैं. And अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो एक ID बैंड उनके बैग में, उनके पर्स में, उनके पॉकेट में, कहीं ना कहीं अगर आप उनके पास हमेशा रखें तो वो भी हेल्प करता है, to help them get back. This is purely to prevent accidents. Internet safety security teenagers के लिए बहुत important है. We need to be aware what they are watching, what kind of social media they are reaching out to, what is the quantity of content that they are coming across, because they have less social groups, friends. They spend a lot more time on internet or on computers, and there's a whole lot of possibility that they can go and get attracted to things which are not appropriate for them to watch. So that's why we have to be very, very careful of that content. Coordinated, supervised multidisciplinary services is the mainstay. Governance and law बहुत important है. This was the latest news that I read and I was really happy to read it, was that Kerala grants relaxation in work hours for employees with autistic children, and 40% जिन बच्चों की disabilities 40% and above, उनके parents को extra relaxation मिलता है in their working hours. So this is the kind of changes, support we need from the government bodies and law. There are various schemes. I have mentioned these schemes because what happens is most of the times parents, they keep spending money, and there's a lot of out-of-pocket expense that you all have to spend just for helping your child learn and get to make them independent. And we do not have insurance systems right now in place to support
all those things, not even partially. So we are always constantly talking about we need insurances which can at least partially support the parent in the financials that they have to spend out of pocket. Be aware of these policies. After 6 years, your child can have a certificate, autism certification होता है RPWD एक्ट के हिसाब से आप UDID साइट गवर्नमेंट की है, वहाँ पे आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, नंबर आ जाता है वहाँ से, and you get at least that ID card because there are a lot of benefits, not too many though, but whatever is there you can avail. एंड इनकम टैक्स कंसेशंस मिलते हैं पेरेंट्स को, वो सारे बिल्स जो आप अपने बच्चे की ट्रीटमेंट करने में यूज़ करते हैं उन सब पे आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है. टू डू सेव देम एंड अप्लाई फॉर अ इनकम टैक्स रिबेट इन वट एवर टैक्सेस दैट यू पे. एंड अगर 40% है उसके लिए अगेन हमें सब जगह वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है. तो ऑटिज्म सर्टिफिकेट हो गया है अब, तो वो सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस है. 6 years के बाद एवरी पेरेंट कैन अप्लाई फॉर इट. एंड travel concessions, hotel concessions, there are a lot of small benefits that you can avail which you may not be aware of. But if you read about them, then you can definitely apply and avail them. You can reach out to us if you have any questions beyond this what we are discussing. We are happy to help you with those questions. Thank you so much. Thank you everyone. So now we'll have Dr. Farzana share her journey with us and motivate all of us, including me, because I always I am very highly motivated when I work for my children. But I really appreciate the way you, in my heart and always I feel that you somewhere inspire me, because you manage yourself so well. The whole big department you are managing mentally, emotionally, you look so strong and sturdy. So we want you to share your experience with all our parents today. So before that, if you all have any question for Dr. Yeah, if you have any question, please feel free to ask. Yeah. How can we teach these changes to our children, adolescent changes? So you use picture exchange cards, pictures download करके आप उसके बारे में उनसे pictures के through बात कीजिए. It's way easier for them to understand that what changes are going to happen. Emotional, mental changes जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. My child is getting very aggressive nowadays. He is frustrated and all changes in his body. Yes, so aggression, frustration, irritability teenage में आता है. सिर्फ autism spectrum में नहीं, मेरा भी बच्चा teenage enter किया था तो हर बात पे snap करता था. You ask me, I am a mother of a teenager. He's 17 years, 18 years, going to be 18 now. But हर बात पे snap करते हैं वो initially. But you have to be calm, patient, and you have to be like, okay, we'll get there. We'll talk about it slowly. अगर हम in response, अगर हम react करेंगे, तो उसका next time वो irritability और heightened मिलेगा, behavior और heightened मिलेगा, and हम उसे नहीं. But when that episode is past, then you can quietly talk to him कि I felt bad when you did this, or I felt like this. How do you feel if I do this? उनके feelings को extract कराना हमारा काम है. उनको words देना अपने feelings के लिए. और जब वो काम डाउन हो जाते हैं उस समय उनको काउंसिल करना, उनके साथ बैठ के रीजनिंग करना कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए. ऐसे करते तो शायद बेटर नहीं होता. वो करना एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है ताकि वो फ्यूचर में उनके दिमाग में रहता है. फिर धीरे धीरे दैट बिहेवियर स्टार्ट्स चेंजिंग. दे स्टार्ट गेटिंग इन कंट्रोल ऑफ देयर. For aggression, what can we do? अगर बहुत अग्रेसिव है टू द एक्सटेंड दैट हिटिंग हो रहा है और Hitting is going on, so I have to start medicine again after 7-8 years. हाँ, सो मेडिकल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं. मेडिकल मैनेजमेंट हमारे क्राइसिस को निप करने में हेल्प करता है कुछ ड्यूरेशन के लिए, बट साथ में बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन गेट हिम ऑफ आल्सो फ्रॉम दोज मेडिसिन्स. मेडिसिन होता है कि हम इमीडिएट क्राइसिस को कम कर लें, है ना, एंड साथ में काउंसलिंग करके हम उनको ट्रेन करते हैं टुवर्ड्स द राइट थिंग. दैट्स आवर फोकस. Any other question we have? Okay, I think ma'am you can.
Thank you. Am I audible? Thank you, Dr. Himani, and very good morning to all of you. And I'm actually very delighted here, and बहुत खुश हूँ मतलब मैं यहाँ पे आने के लिए and to share our experience. I'll start with your question. Okay, so Dr. Himani explained very nicely how to deal with the children who are in the spectrum. I am also a mother. Nothing to do whatever you do with your other children. Only thing is that we need to do little extra with those kids. If you just understand that little thing, the journey becomes very easy. अगर आपका कोई बच्चा जो न्यूरोटिपिकल हो वो अगर एग्रेसिव होता तो आप क्या करते, या आप अगर एग्रेसिव होते तो क्या करते? तो जस्ट वही सोचिए. Don't look all the children through the lens of autism. This is a special kind of disorder they have, but if we can reduce those things to a very great extent if we think that we can help them, we can support them, but our work becomes little more. That is the only thing. My son Shayan is now 12-year-old. Our journey was also not at all smooth, not at all. It was full of many challenges. So we are all in the same boat, okay? But how we are dealing with him, though I am a parent, both of us are doctor as well, and both of us are public health professional as well, okay? So what I'm going to tell you, what I'm going to share with you all is what we have done, okay? And till now, till today, I'm standing here. It is a journey, as I always mentioning. It is not that we are having some disease and you'll give the medicine and the child will be all right. It is not. First is the acceptance. You accept that your child is not a neurotypical child. It's different. When you accept it full-heartedly, the journey becomes very smooth. So that is the main crux, and I just want to start with this thing. First, don't think that why they are different. No. If they are different, if you have 2 kids, if you have 3 kids, if one is different, little not neurotypical, for the other kids as well, the way you deal, it is little extra thing we have to do. Little extra knowledge we need to acquire. Little extra support we have to give them. That's the way we have to deal with them. So, autism, we all know it is only a neurodevelopmental disorder. It is not a psychiatric disorder. Okay? So, previously, people used to think that it was a psychiatric disorder. No, it is not a physical disorder also. It is a neurodevelopmental disorder. Okay? The reason is still yet not known. The main problem with the children with the autism is the communication. Okay, they are not able to communicate the way that we communicate or the other kids communicate. And some other features like repetitive behaviors or some other restrictive behaviors are there. Okay, and not, as Dr. Himani mentioned, that no single individual is same, isn't it? All of us are here, all of us are different. Okay, can you tell me I am completely normal? No, no individual is completely normal. No one, because something or the other thing. Because I'm a public health professional, so when I teach my MBBS students or the postgraduate students, first way WHO has given the definition of health. So definition of health is a state of physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. Okay. And WHO said this definition of health is never achievable. At any point of time, no individual in this earth can be healthy as per the definition. Because at any point of time, it is a physical, mental and social. Maybe you are not feeling good, then you are not healthy as per WHO definition. If you are having headache, then also you are not healthy as per definition. So no one is completely healthy. No one is completely normal. Please accept this and then you'll see that your journey is very easy. Okay? So these are our challenges, all of our challenges. When in the beginning
when we get to know that our child, boy, girl, whatever, is having some problem. First is that how to diagnose, where to go. These are the first important questions. These are always coming in our mind, and we are confused. We are totally don't know where to go, who is the right person. That is the first challenge. Okay, so that I think all of us have already gone through. Some maybe are in the process. So we have to get it done. And for all the other diseases like doctor shopping or therapy shopping, that we should not be doing. First, we do our homework, where to go, and start the journey from there. Okay? All of us have done that and we are in the process. The shopping things actually creates delay. And I have also done one study previously. Like we have seen when I talk to parents, the delay from the diagnosis to the therapy, it gets delayed. And the early intervention therapy is the main important part. Sooner you accept the thing and sooner you start the journey, the more and more the path will become easier. Okay, so these are the things. These are our problems actually. And sign and symptoms. What are the sign and symptoms? How to diagnose and everything. And then next, therapy. Where to start the therapy? All of you must be going through some places or the other. Maybe with Dr. Himani, or wherever you are going, therapy is. For example, if you are having any disease, physical disease, you have to take medicine, isn't it? Either antibiotic or if you're hypertension, I'm hypertensive, so I'm taking medicine for the lifelong. So for them also therapy is it's not for lifelong, it's not that for the lifelong, but in the early years it is very important because we don't know. Our therapists will help us to know what to do and what not to do, how to deal with them, and how to continue our journey. Then, most important is the patience and persistence. Okay, yeah, yes, there time will come when you will become very frustrated. Time will come, you will feel that nothing is happening. Okay, but it's not a miracle. It's not that today I'll take the medicine of headache and it will be all right after 1 hour. It is not like that. That also I'm telling it to you after the 12 years of journey. It took me so many years to understand that it is not a miracle, and our journey continues. It's not the end of the journey. It is going on. Okay, so for all of us, first I always like whenever I talk to any such parent I come across, please accept them wholeheartedly because I have seen parents are not accepting. We are talking about the society and we are talking about the other people to accept because if we are not accepting them from our core inner self, then that will show in your body language. That will show your frustration. You will give it to your children. Okay, so you have to accept that. You have to think that yes, it is not something. It will be all right. No, but we have to the way they are. We have to go into their world and we have to be with them and we have to teach them in a different way. That's the thing. If I say A for apple, he or she might not understand. But A for apple, it is not always required to teach anyone A for apple. Na? A for so many things can also be there. So why it is always so stereotyped that we have to learn something only this way? We can teach them some other way also. So this is the only thing. It took us, Dr. Himani, I'm telling you, it took us quite a long time to understand Shayan what is go and what is come. Still now we get confused with go and come. Achha, if you think that it can be okay. Why I'm telling Dr. Himani go. So if it maybe many years back, if that goes, it would have been the otherwise. It would have been the otherwise, isn't it? So why for go अब जाओ का मतलब go ही क्यों है? हो भी सकता था कम, isn't it? So it's that the okay fine, we know that we have to stay in a society and we have to follow some societal rules and regulations and everything. That's why I have to teach my son that go means jao. So he also understood. Now also sometimes he get confused. Okay,
So you have to accept. And it's a fun. I tell you, in my house, three of us, it's totally a fun time for all of us. We through fun and through like I'm typically a very short tempered kind of person. You might not understand because you don't see me because but with Cheyenne, believe me, I'm very angry sort of person. My brothers and sisters, my father also, my husband also knows that. But with Cheyenne, I don't become angry. I don't show my frustration. There I control everything. We just cannot. My mother used to say that being a parent is not very easy. You have to bring changes in yourself. Because whatever they see, they will learn. And you don't need to do many things. So these are the things, our challenges, we know, and all of us in the same boat. But for communication barriers, as Dr. Himani already mentioned, social stories, play like picture cards, these are very important. I remember in many occasions when Cheyenne was very small. So whenever we used to travel, we used to take printout of all the images of the train, we were going to Bangalore. We used to go to our sister's place, her house, her rooms, her bag, all the pictures. We used to take the printout, and then we have to make a social stories that will be even starting with his like packing his bag, and then from where to where, how the train will look like, how the station will look like, because when there are crowds and everything, they feel frustrated, the sensory issues can crop up. So prepare them for any event, for even for going to mall, for going to park, everything, prepare them. Now he is, we if you tell him verbally, he understands, and now we can prepare him verbally. But when he was not able to understand verbally, we used to make social stories. Okay, and where we used to get stuck, we used to take the help of therapists, educators. So they used to do, whenever we used to plan anywhere. So we used to take the help of our therapist. Then we need to go there and just prepare him. So she used to tell us that give me this. We used to send her their picture, and then we have to repeatedly enforce the same thing at home. And the journey becomes very, because it happened when we never prepared him earlier, and we started the journey. It was very messy, very disturbing, socially inappropriate behaviors. In the airport, he is lying down. So many things we also faced. One incident I just want to mention. One day he was very small, 3.5-year-old. He had a very and you have to find out something which they are very like which interests them. There has to be something which is of their interest. For most of the children with special needs, they have something which interests them. Try to focus. Do never take away from that thing from them. We never did that. He was very fond of cars from the very beginning. He was obsessed with cars. We never took that thing from him, because this is the thing. Through that thing, we can teach him the other things. One time it was there. Emotionally Traumatizing हो जाता है. Don't take that thing away from them. Okay, because it is from my experience I'm telling you. Because through that, slowly, you may find that this is becoming his or her career in the long run. So, but at the same time, don't try to make it a like think that that they become too much obsessive. That parental control has to be there, but at the same time, don't take away from. So he used to buy car every day. So there are two shops, one in Alaknanda, one is Kalkaji. The shops, I think all the cars in the shops he bought in 1.5 years. And they used to bring all the sales were because of Shine. We had cartons of cars. What to do, because he was. But at one point of time, first we allowed him, but sometimes we stopped him. He cried. But again, I'm telling you, this is a teamwork. Whatever mother decides, the father has to stick to it. If father decides something, mother has to stick to it. It is always a teamwork. Both mothers and fathers decision should not be different. When I decided that this is something, it is happening too much, then we stopped him. But obviously he was buying the cars. We started, but slowly, when he knows that he understood that
it is not something good thing that he is doing, and we used to tell him it is a bad job you are doing, it should not be. Always, whatever good, whatever bad, try to communicate that this is a bad job. As you were telling that he was hitting and everything. When he is coming down, they tell him that this is not a good thing what you are doing. But at that point, as Dr. Himani mentioned, that don't also shout at with him. Okay, if I didn't try to manage his tantrums or meltdowns at that moment, and then when he calms down, try to convince that this is, and with pictures maybe, if he hits, what will happen? Mama will get hurt, Papa will get hurt, this, the way, and then he will understand slowly, he will live it. So, my early 2 years of Shayan was also very challenging because at the time did not know that he is going to have autism in his later life, and I was actually, he was premature, he was low birth weight, he had feeding issues, and he was my only son, and that's why I did not work also for 2.5 years. I just took a leave and everything. I just did not work because I was not able to manage, and I was having lots of challenges. He was only 1.9 kilo when he was born, and because I was hypertensive, it was a very challenging pregnancy also. But at the same time, and it was very challenging. First initial 2 years was very challenges, and first initial 2 years, I just want to mention the importance of nutrition at that very moment, because as a public health specialist, I think that is very my prime responsibility to tell you the 1,000 days of a child's life when the child is in the womb of the mother, and first 2 years. We call it as 1,000 days in childhood. This is the maximum period where the child the brain development of the child takes place. 90% of the brain development takes place, and you have to take care of the nutrition. As a doctor, I knew it. As a public health professional, I knew it. That's why I thought that this is, as he is low birth weight, so it was a very challenging phase in my life, and I tried to, like, so that he is not nutritional challenges. I try to, like, compensate whatever way I can. And we were in Jaipur at that time. And in 2013 October, we came here in Delhi. We celebrated his second birthday in Delhi only. And at the time also, we did not know anything, something of such things are ahead of us. But we used to observe that he had delayed speech. Okay, though he was till 2 years, he was not speaking. But at that time, we thought maybe it is because in my family, in my husband's family, everywhere the child are speaking quite late, like either at 2 years, more than 2 years. So I thought maybe okay, fine. My sisters are also there speaking. It was not never a like matter of concern for us. So we never thought. And when we came here in Delhi, I also joined my in Hamdard very new after two and a half years of break and everything. But yes, he was having less eye contact. Self talk was there. Sitting tolerance was not there. He was very like used to run everywhere in the house and everything. He used to play all the toys and everything were scattered and everything. He was not like very neurotypical. But we being a doctor, we never thought that these are something like important things to look on, and we have to get diagnosed or something like that. But it was, I'm talking about October 2013, and we in no, November in 2014 February I joined Hamdard, and March 2014 we had put him in a play school, and we thought everything is okay, everything is normal. But yes, he was not speaking, and he was only one or two words. And but from the play school, we had feedback that you should go for assessment. That was the first, like someone has the flag sign what someone has raised, and that was that. Then we thought, what kind of assessment? Because we also did not know. Don't think that being a doctor you know everything. No, in MBBS curriculum, hardly anything like autism is being taught. It was even if I have done my MD in community medicine there, so nothing. But even if I would have When done I did my pediatrics 20 years back, there was only one short note that short used to in come pediatrics when what more was told about it. you are studying the pediatrics for 3 years,
and only short note he was like Only one paragraph. only paragraph about autism. So you can imagine we never knew anything about it. Don't think that we all are in the same boat. Don't think that being a doctor we know something different and something extra. No, not at all. Because if pediatrics, being a pediatrician also, you don't know only one paragraph about autism, then how you can expect we know? In the last 10 years, but there has been a lot Yes. of change, especially in pediatrics. Yes. We have a whole group of developmental Even my pediatrics. father is a pediatrician, but we didn't know about, he didn't Yes. know about amongst therapies Yes. until we started them. Yes. We got to know when he was 2.5, but we didn't believe because it was not that hyper. I mean, There Yes. is ऐसा so कुछ much नहीं था, change that has happened. ऐसा in कुछ last नहीं 10 था years. कि कुछ सोचें कि yes he had some problem. We were told कि yes you need to go to therapies. So being aware that at 3 we started at 5 and we were so late. I mean जब हमने Yes. शुरू किया we got to know that हम कहाँ miss कर रहे थे. So I'm saying even my father being a pediatrician he didn't know about therapies. Yes, yes. Even Awareness is really important. even when from the school play school they raised the red signal for us, we went to a pediatrician, but they said it's okay. There it may be delayed space. It's okay. You observe for another 6 months. And we were. It was June 2014. We were okay. Fine. We'll see. And then Dr. Roy, Shushovan Roy, sir used to come in our house. He mentioned that no, Farzana, please go for an assessment. And then I talked to one of my pediatrician in my hospital, Dr. Patwari, and sir then referred us to Dr. Praveen Suman in Gangara. It was 15 September 2014. It was the first time we went to a developmental pediatrician in Gangaram for the we never thought something is going to happen like that, but just for the opinion and everything. She instantly wrote ASD instantly wrote. And as a mother, I know for all the mothers and for fathers even, it is something you don't expect, and it is something. What is that? And no, my son doesn't have. No. It must be something wrong. We have to reconfirm the diagnosis. And then we got assessed by Dr. Nurani. Nurani was there. He was there. And they told us to go for another 2-3 days for the detailed assessment and everything. We went. But back in my mind, always it was there. No. Nothing of this thing. And again, we do the reassessment and everything. Everything is going to be all right. The way you react, denial, we deny the things first. And then 12th November, that comprehensive report came, and it had shown all the detailed assessment and everything. I was still in the denial phase, but my husband was not, luckily, and he said that no, we have to start his therapy. He consulted with so many his colleagues and everything, and then what happened? We were convinced that okay, fine, whatever it is, we'll start. But it was quite far for us. And then, as per Dr. Roy, one of my colleagues, he suggested, why don't you go to Vimans? At that time, Vimans was near to us. Yes. And then we went to Vimans, and again they did the assessment and everything, and then it was confirmed that he is in the spectrum. So nowadays, you are like must be everyone of you are knowing that it is a spectrum. It is not autism, because no two children with autism also will have the similar characteristics. Every child is different. Every autistic child is also different. That's why it is in the spectrum. There are many characteristics, but maybe everything is not the similar with all the kids. So that was the dates. My husband remembers these dates very. I forgot actually, but so that is that I already mentioned that it is not easy, frustration, not accepting, but because after 12 years I'm in such a position to tell you that accept it the sooner it is possible, because early intervention therapy actually works like a miracle. They are very important. The more the early you start the intervention, that's why acceptance is also very important. And I always tell everyone, don't look into these children through the lenses of autism. Never, always, because whenever you deal with the way you deal with other children, because I have only one son,
We have not planned any second kid because we wanted to give our best for him only. So I don't know about the, but I when I deal with my other my niece, nephew, the way I deal with them, I also deal with Shan. But my efforts are more. My study. I have to study the things more. I have to run to the therapist. What other parents are not doing. I have to teach from them. I have to learn from them. I have to consult others, and then it is a teamwork always. It is not I am doing alone. My husband is doing alone. Shan is doing alone. It is all of us doing. Even we are Bengalis and we are staying in Delhi like since the 10 12 years. But since beginning, as Shan was not speaking, so we decided like our therapist and everyone told us to stick to one language. So we only teach talk to him in English. But now, as he's going to school, he has picked up Hindi very well. He understands Bengali, but he doesn't speak. It's not important. It's not necessary also. Only it is important to communicate. Communicate in any language. That is the important. And all the tantrums, all the meltdowns, everything because they are not able to understand you. You are not able to understand them. What is there in mind? They are not able to express their needs that you were mentioning about their frustration, about their hyper behavior and everything, because he or she is not able to make you understand why she is feeling. As Dr. Nimani mentioned about the adolescent periods and so many things, so many changes are happening. You have to ask them. You have to educate them, but also every day you have to be with them. Okay, for example, by giving examples. Okay, you are feeling pain. He may not understand what is pain. He for a very neurotypical child, he will understand. अच्छा दर्द हो रहा है. उसको दर्द भी नहीं पता. What is that दर्द means? So you have to make him understand. This is pain. So everything you have to make him understand, make him or understand, and then be with him in every step of his life. He is going to bathroom, so he need to do his own like potty wash and everything. You have to make him understand. Even sometimes, maybe by doing yourself. My husband did it in front of him, and then he started learning. Because we have to like to make them understand actually what is right, and then they cooperate very well. Shan was also very hyperactive in the initial years, but slowly I can see since this 1.5 year, 2 years, he has settled down. He is very calm, and he's understanding everything. He's trying to understand. He's trying to obey all the commands and everything. So as I was talking about the therapy, we started the therapy, and at that time actually that the common they have started. It was for 1 year, 3 hours, 5 days a week. It was like a preschool kind of thing, and they were all speech therapists, occupational therapists, and special educators were there. They used to leave him in Women's at 9 to 12, and it was like a normal school he is going, and he used to enjoy. And it was, and he started after 6 months of therapy. He started with words. The first word was car, bus, because he was so obsessed with car and bus and everything. And then the education. Then the main hurdle is education. Like after the therapy, after 3 years or 5 years, maybe after 4 5 years, then we have to put them in school, and that was our real challenge, because always after Viman's, what to do, where to put him. We stay in Alaknanda. There are many schools in Alaknanda. We applied. He got admission and also, but we were searching for, as you were mentioning about the inclusiveness. We were searching for a proper inclusive school. Though there are government mandates are there, the school should be inclusive and everything. But in truly speaking, not every school. Very few schools are there in Delhi NCR, those who are actually inclusive. So from the beginning, it was there in our mind that no, we have to put him in a very completely inclusive school. But where and how? That was the major concern. So after Women's, somehow like someone told us to go to Magic Years. It is a Montessori setup.
we went there and somehow like he got admission for another. It was just we are trying to pass the time because which school to go and where to go, that was the biggest challenge. So he went to Magic Years for 1 year, and after that, after the Magic Years, again he went. So everyone was telling us about the step by step. But again, step by step, Noida is very far. We stay in Delhi, so it was again a challenge. But step by step, Panchil was very near to us. But it is a preschool, not it is the main school. So he was in step by step Panchil for another 1.5 year, and then again we were like we wanted to put him in either in Vasant Valley or Shri Ram or something like that. But it was very, and we were trying since beginning. My husband, it was total 37 mails he wrote in 3 years. We were just trying continuously, and finally in 2018 onwards, he was admitted in Vasant Valley, and he is still in Vasant Valley. And it is actually a very inclusive in nature, in the truest sense, not segregation or something. It is totally an inclusive school. So this is very important, that embracing the differences, as I already mentioned, that thought we have to take it out. They are different, we know, but we don't need to treat them differently every time. Wherever they need support, we have to give them support, but we have to treat them like other normal kids. And that also we have to educate ourselves first, and then the society, and then everything. In now, whichever society we are staying in, everyone knows about Shayan. Whenever he goes out, everyone knows as a Shayan. Everyone will be alert. Shayan is there. So from the security guard, everyone knows he has some special need. Everyone in the society knows that he has some special need. So whenever he will be in the park, anyone from the society, they will come and they will have that sensitivity to talk to him. They know that he has special needs, and they will talk to him that way. They will. So that is important. We always take him, and we proudly tell everyone that he is in the spectrum. He, whenever you go to mall, he just goes and starts speaking to anyone, and he loves cars and cricket. These are his obsession, passion, whatever. He knows all the cricket players. He knows about all the countries. You just ask him anything, like which match is there, he will give you all the details. All the countries' national anthem he knows, because these are all his passion, and we don't stop him from doing that, because ultimately we have to build upon his career also. So if he can do something which is his passion, not necessarily he has to learn science, maths, and everything the way we learn. If he can know. I'll just give you one example. When we teach him maths, continuously you tell him what is 10 minus 5 and everything, and give him pen and paper, he's stuck. He doesn't know 10 minus 5, what is that? Okay. But when the match is going on, and when he will just calculate in a fraction of a second, India win by itna run. Fraction of a second he will minus. Before the commentator tells anything, before the screen is showing, before that he is subtracting and is telling India wins by 89 run. I was shocked. Okay. How? Okay, when I minus, then that means he knows. That means he knows. It's only that he is not doing it in paper. So in we are little fortunate that he is going to Vasant Valley, and they have accepted that, okay, if he doesn't want to write, no need to write. Bring laptop. He takes laptop. Whenever he has to do his homework, he does. He is very good in making PowerPoint presentation. He has started He had learned everything by himself. We have not, because these are his passion. Digital world is passion, and yes, we know that we don't want to like entertain them too much with too much of gadgets and everything. This is our concept and everything, normal concept. That is true. Parental guidance is important, but you have to find out what is they good at. If we can find it out, they are also happy in their own world. You are trying to teach them being into their world, and they are also learning. So they know everything. I'll just show you, and also celebrate achievement, each and every milestone. Celebrate. Give them that, yes, you have done a very good thing. That will give them, motivate them. It will make them confidence. Whatever little things they do,
celebrate with them, sing with them, dance with them. Then he or she will say, yes, something I have done very, very. Mindfulness with extra, like whatever you all know what we need to do. But don't see them, don't look up to them through the lens of autism. I tell them, tell everyone. Wherever you go, don't feel shy. Like as ma'am was mentioning that the father refused to send the video. Why? Because if we don't sensitize the society, how our children are going to like do something. Everyone has to know. There are children, there are people with special needs. And we have to be sensitive towards them. Not only with autism, with ASD, with so many things, maybe with physical handicap and so many disability and everything. But people are doing, we have to focus on the ability. That's the most important. So this is a slide. This is a PPT slide. He has made each and every one he copy pasted. Only the stadium he has taken one blank stadium. These all the maps and everything he can. So now we can see that he is very fond of this digital art and everything. We're trying to build up his career in this digital technology, digital art and everything. Maybe you never know future what is there. He may end up doing something great. We also don't know, but we just hope that something will happen. So he's very fond of art. This is a PowerPoint PPT. The background was all blank. It is everything he copy pasted and he made this slide.
So that those kind of presentations are innumerable in his laptop. He keeps on making. Okay, one more is then he's very fond of cricket also. So these are each and every player he picks and copy paste. You can see the alignment. He will magnify the slide and he will very meticulously he will do that alignment and everything. So why I'm mentioning that is that every child must be having some or the other quality. Don't think that this same thing will be there some other kids. No, you have to maybe he will be or she will be good in singing, dancing, anything. Just try to find it out. And don't think that we have to teach them all the CBSE board, they have to pass 10, 12 and anything. No, he is also not doing. He is in Vasantili, we have adopted for functional academics and now we'll enroll him in NIOS because some kind of certification of 12 pass is something is important. We'll enroll him in NIOS when he will be in class 8. We have special educators. He's still going to special educators. Because they have become our as I mentioned, it is a teamwork. They are there in there. They will be there in our life journey. Whoever is there and for the life, because whenever we cannot go alone, because we need their help at any point of time. So we are taking their help. We are taking schools help, and slowly we are moving ahead. These are his photography. He is also fond of photography. We never knew he has a phone and he keeps on clicking pictures. Someday we have seen there so many good pictures. So these are also his strengths. So we have to focus on that. So photography is one strength. Digital art is again another strength. So we are focusing on that. We are not trying that he should be topper in the class 12 with CBSE board and everything. No, and we are very happy with that. Being doctors, we never want that my son will also become doctor. No, this is the normal thought. No? But what we want, we want that our child should be something like that. No, please don't do that. Whatever they are good at that, please focus on that. So journey continues. As I mentioned, it is a challenging journey. It will continue for life, and I think if you just can manage this way, that accept them the way they are, try to make them learn the things through their way, not from our way. So I think if they can't learn the way we teach the way they learn. ये तो हम लोगों ने बनाया ना कहीं we have made this normal thing A for apple. What if A for A is not for apple? It can be anything. It can be anything. Yeah. So it's हमने सारा norms बनाया. Let us also, we can also change the norms. Yes. So let's try to enter their world. This is my thought. They are making us to you guys. Yes. So we also started thinking, why come means come? Why not go means this way? It has someone has made that way. So it can be different way. So, and this is for all of us to stay motivated in the journey, because many big. Yesterday I was just going to Elon Musk. He's also in the spectrum. Yes. Newton. So many big people are. I think it's Elon Musk's passion for cars that led him to Tesla. Exactly. You never know. Maybe you will hear someday the Cheyenne's name also something like that, because he is too much passionate about cars. He will just look at this part of a car and will say, what car is this? He has that much of a passion. So I cannot take car away from his life. This is his passion. This is his life. He has to build his career, maybe on car, maybe in digital art. Now we are planning for car designing and everything. You can also get in touch with multimedia. Yes. I would love to actually. Yeah. So this is our journey, and thank you so much. But I'll always tell all of you that please always try to be with them at every step. Try to understand why they are behaving like that way. And if you can understand that, you can have the answer yourself. That's the only thing I just want to say. Thank you. Thank you so much.
parents? Actually, I am so delighted. Actually, I think we have to talk. We have to come with our challenges. The more we come up, Yes. accept, the more we are leading our children to be accepted. Yes. And we have to make our society. कितना टफ होता है आपके लिए तो आइडेंटिफाई करना चाहिए आपने स्पेशल ग्रुप की आइडेंटिफाई किया थेरेपी सेंटर को कैसे आइडेंटिफाई किया आपने how did you identify which is the best service for your child? That as I mentioned, we did not go for shopping. Wherever we started first, we have not identified also. Whenever someone suggested us go to women's, we went to women's. It is your own instinct also. It will tell you that yes, My child is getting better. The best way is to monitor your child. Yes. Is your child learning? And Is he more or getting less, better? and more or less, Is there everything some is change? same. Best. I always tell the students also, nothing called best, because everything is almost every wherever जब you मैम go ने to एमबीबीएस everything. किसी कॉलेज से किसी और कॉलेज से किया होगा, मैंने किसी और कॉलेज से किया है, और एक बाहर से जो डॉक्टर आया है एमआरसी More or less, these are all करके same. उसने किसी और कॉलेज से किया है. But we have all read medicine, and how we implement and execute it depends on You that have to be individual. stick to one thing. हाँ. Even for physical illness also. If we go for doctor shopping, na, that the disease doesn't get cured very easily. जैसे मेरा किड अभी 5 साल का होने वाला है तो अभी जो स्कूल्स वगैरह में आप बता रहे हैं कि स्पेशल एजुकेटर वगैरह होते हैं तो वो स्कूल्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्या That is still a like challenge for us. Like Because there are not many Many, facilities in nearby space. Everyone can't get admitted to Step by Step So, or Vasant Valley or Manav Rachna, whichever is an inclusive school. But what she meant was that we applied to 37 schools. Application was sent to 37. The effort taken into it was a lot, which probably must have somewhere triggered those 37 schools also to think about कि हमें ये facility चाहिए क्योंकि हम बच्चे को नहीं ले पा रहे हैं. and आप जो भी स्कूल में जाएंगे वहाँ पे प्रिंसिपल से बात कीजिए. If they are taking a special need child, they have to be little sensitive, little more like and sensitive at times towards what happens education. is that schools they want to take up, they want to initiate, they want to start, but they nobody's reaching out to them, and once they have inquiries, then they start building that wing in the school. I'll give you one more example. In Guwahati, there are very limited facilities. My sister's son, though he also had delayed speech. Actually, both of them, Shayan and Danish. Danish is there also same age. He also had delayed speech and everything. So he also got SS and everything, but he was not diagnosed with autism. He speaks and everything, but he has some learning issues, which he is not able to. He is not able to pick up asthmas. Because there they teach you asthmas and Hindi. He was not, because he also spoke in English since his childhood. So they were facing lots of problems in the school. Then we told him, go and meet the principal, that he has issues, and if they don't provide that extra facility, they don't need to, but at least they should not made it compulsory for Danish to read asthmas where he is facing so much of. Slowly he will learn. Give him some time. They should not expect the same performance like Accommodations, others. Basically, we need to accommodate. And the school need to be flexible to accommodate the child the way the child is going to learn. Yes. So वो flexibility, वो accommodation school को, teachers को, principal को हर level पे आने की जरूरत है. So जब हम खुद भी बात करते हैं, बहुत सारे parents school में जाते हैं, they ask, मैम आप teacher से बात कर लें if she is not able to manage or she needs help probably. So I said yes, आप मेरी बात कराओ teacher से, and then I give her few ideas. She said okay ma'am, let me try this in the class for him and see how it works. So उसमें क्या होता है कि teacher also feels that there's some support given. Parents also doesn't feel so helpless कि हम 2 points को connect नहीं कर सकते हैं. और जहाँ challenge आता है उसके बारे में read करो, information निकालो और professionals से पूछो कि हम क्या कर सकते हैं. If you will ask 3-4 of them, ये जो यहाँ प्रोफेशनल्स हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट से, ये आपको 4-5 आइडियाज बता देंगे अलग-अलग कि ये आप कर सकते हो to help him settle. You can do this, you can try this way. That knowledge that you are collecting and implementing in your child will make all the changes. Maybe many schools they don't know. बहुत सारे we can educate them. We can tell them, मैम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा different, थोड़ा सा extra need है. You can start. We can start. We have to start. We have to keep talking about it. Keep poking. The thing is that आज जो prevalence है वो 1 in 36 में एक बच्चा autism spectrum पे है.
कोविड के पहले 64 में एक बच्चा था, 3 साल में द प्रेवलेंस हैज चेंज सो मच, इट्स नियरली डबल्ड। जैसा आपने बताया ना अभी कि बहुत सारे सेंटर्स दिखने लग गए हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट दिखने लगे, पहले नहीं थे क्योंकि प्रेवलेंस भी कम था, पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी कम थी, पता भी नहीं होता था, है ना। सो बोथ थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, इसलिए भी प्रेवलेंस बढ़ रहा है। बट व्हेन इट इज राइजिंग वी हैव टू वर्क, वी हैव टू बी ऑन आवर टोज। जैसे हम कोई भी मलेरिया, डेंगू और सबके लिए जानकारी रखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए, हर इंडिविजुअल को चाहिए कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे क्या करना है टू हेल्प। So let me welcome our next speaker. We have Mr. Rakesh, who's director of AIMS Multimedia Private Limited. He's also a National Advisory Council member at National Olympic Association of India (NAAI) and a knowledge advisor to Jigyasa Charitable Trust. And I would invite him today. I'm very grateful and thankful to him for having agreed to come up and speak to you all. They hold and teach and train children to become independent. It's I think one of the important vocational trainings also for them. So let us learn from him how and how much they have been able to do it, and parents knowing about it also helps them to be able to reach out when they need it. You may not need it today, you may not need it immediate, but if you know something like this our children can learn, then you can reach out to them or to people who, there are a lot of things happening around us which we are not aware of. So we are just trying to create that connection so that people know what all we can do and how all we can teach our children. So yes, um, we would want you to speak a bit about various job opportunities and how children on autism have different abilities. So how they can choose those jobs, and also about how you help them in training them. Do you have a presentation? No. No. Okay, great. Wonderful. So, yeah. Very good afternoon. Good afternoon. Thank you so much, Dr. Himani, Dr. Pooja, to organize this wonderful gathering here. I was listening, Dr. Farzana. It was so heart-touching, so emotional, and I was actually deep into the insight when you were sharing your own experience. And I believe that every parent have their own story to share. I think the time since last 30 minutes when I was listening about autism, but because tomorrow is International Day for Persons with Disability, so I'll touch the different angles also. Let us, for the first few minutes, I'll try to interact so that you will be also the part of the same system, so that you will start relating whatever I'm saying. I'm sure that you may have aging people in your family. How many of you have? 70 plus, 75 plus, you all have, right? Aging people have lot different type of different challenges. A lot of people, they have Parkinson's, they can't move, they can't share their expressions and emotions. A lot of time they can't even shout, they can't even loud. They have their own different world. Almost 7-8 years back, when I got an opportunity to interact with WHO Zero Office in United Nations, so whenever I used to meet the top level management, they always used to say that, Rakesh, the disability doesn't mean only the children. We should also focus about aging people. And actually, because WHO, they were talking about Switzerland, Zurich, and they were mentioning about the aging people, circumstances and conditions there. We were not be able to relate because I had no aging people that time in my family. Today I have that condition. Why I'm sharing this with you is disability doesn't only mean that your child have certain condition. It's gonna happen with us also. It can happen with anybody. Imagine there's somebody who is in border fighting for the country, and because of some weapon, because of some accident, the soldier lost the legs, the soldier lost the hands. They also become the disabled.
disability, we should start living that condition. I was listening for Zara ma'am, she was mentioning that we should accept it. Accept doesn't mean that, see, I believe that we all are sensible people sitting in this room and we accept that condition. Acceptance means what? Acceptance means we should start living with that condition. What happened is, we accept, okay, my child has this condition, my child has Down syndrome, my child has cerebral palsy, my child has autism. But what happened, for the next 15 days, you'll be so enthused. 16th day, early morning, you'll be so frustrated. Why God this happened to me? मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तू क्या कर रहा है? That is not called acceptance. Acceptance means my face looks like this, my height is this, my body is this. This is how I am, and this is how he or she is. And I think when we start accepting this condition, we can conquer any milestone in this world. Almost 14 years back, Himani ma'am, when I came into this arena, so people used to have one question that, are you a parent of a special child, or you are a sibling, or why did you enter in this world? I don't know that why I should not. Why only the people who are facing the challenges, only they should be the part of this arena? Why only the professional who are thinking about? I think that if this is a responsibility of every individual, is that we should contribute whatever we have. If you have time, if you have knowledge, if you have resources, we should contribute. And obviously, if this contribution can make economical scale, not only for the companies, also for the beneficiaries, what is the problem in this? This is a win-win situation for all. And this is what I, almost 14 years back, I learned from one special school. It was YMCA in Nizamuddin. I'm sure some of you know about that school, right? And that was for the first time. Ames Media is an education solution company, so we were not into disability that time. I'm saying somewhere around 2010. And for the first time, when I entered that school and I saw some adult with special need wearing some uniform, knicker pehna tha, pant shirt pehna tha, and they were doing something. And I was so curious. I think curious, furious, सब एक साथ मेरे साथ हो रहा था. I couldn't understand, I couldn't relate it. कि बच्चे इतने बड़ी बड़ी उम्र के क्या कर रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म में. And then I went to principal ma'am. That time Angelina Lekra, she was the principal. I'm sure जो पुराने लोग हैं, जो पुराने parents हैं, if they ever have visited to YMCA, they know her. So I went to her and I said that, ma'am, we wanted to do something for them. She said, okay, what you will do? I said that we teach computer graphics education. We wanted to teach this education to them because we believe that they will be happy. They will enjoy learning this. You know what she said? She said, Rakesh, I respect your emotion. I respect your feeling. But sorry, I can't allow you to do this work for the children. I said, ma'am, just give us one day time. I'm sure you will love it. We are not charging anything. She said, Rakesh, not about giving you the chance. It is about, see, listen this properly. It is about what if you will experience something negative and the other day you will not turn back. This happens very less a few times when a person having no condition in the family or sibling coming forward to do something for them, my responsibility to make you fit for the industry. So she said this to me, darling, if you want to do this, go and learn about this condition first. And that was a time I had two choices. Either I could go back to office, start doing my own regular job, or we could took that as a challenge. I thought, let us try to give it a chance. And Ibhas is one of the first hospital in India, ma'am, Shadrawala. So that time, Nimesh Desai, he used to be the chairperson of that hospital. Then Vimans you mentioned, Dr. Chaudhary, who were the founders of that hospital. St. Stephen, Max, Apollo. Then in Bangalore, there is a hospital called Nimans. And then in Karnataka, there is one big group, Dr. Ashok Pai, the psychiatrist. They are a very famous psychiatrist there. So I met a lot of people. And then I realized, this arena, this is not just a small community. It is an industry itself. Because WHO was saying 15% of population. Imagine that time, if India was 1.2 billion, that means what? 15% of 1.2 billion was what? More than Australian population. I thought, boss, this is not just a small community. We should be little more serious. He was right. And then we understood that what are the challenges the parent feels. So there are a couple of challenges
I assume that couple of the parents here, they have a children in the very early age. I believe that some of the parents are here, they have a children in adolescent age, और धीरे धीरे वो adulthood age की तरफ जाएंगे. आपकी पूरी लाइफ में 5 ही तरह की expectations होंगी. फर्स्ट इज, बच्चा छोटा होगा तो एक थेरेप्यूटिक मदद आपको चाहिए, जिसको आप लोग रिहैब सर्विसेज भी बोल सकते हैं, राइट? जिसमें स्पीच चाहिए, ओटी चाहिए, 50 और चीजें चाहिए. ऑल्टरनेटिव थेरेपी करना पड़ सकता है समटाइम. एबीए करते हैं, ब्रेन जिम करते हैं, आरपीएम करते हैं, ये बहुत कुछ होगा. सेकेंड स्टेज में आके एजुकेशन चाहिए होगा. एंड एजुकेशन कुड बी व्हाट? एकेडमिक एजुकेशन चाहिए. फिर हम स्पेशल स्कूल जाएंगे, इंक्लूसिव स्कूल जाएंगे, इंटीग्रेटेड स्कूल जाएंगे, स्पेशल स्कूल जाएंगे. थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, उसके लिए वोकेशन चाहिए होगा. एंड फिफ्थ इज, हो सकता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी बनेंगी विच इज हैपनिंग इन इंडिया, जहां पे पेरेंट्स ग्रेजुअली एजिंग हो रहे हैं और बच्चे अपने यंग अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं. यू नो, अभी तो आई कैन सी ऑल द पेरेंट्स, दे आर क्वाइट यंग हियर, बट जब आप सब लोग लगभग 55-60 की एज में आते हैं और बच्चा लगभग 20-25 की एज में होता है, आई एम टेलिंग यू दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट सिचुएशन. और वहां पे एक ट्रिगर होता है दिमाग में कि व्हाट आफ्टर अस वाला, और लोग फिर रिहैबिलिटेशन के अलावा रेजिडेंशियल फैसिलिटीज की तरफ भी ढूंढते. ये 4-5 सर्विसेज हैं. व्हाट आई रियलाइज दैट टाइम वाज, हमें लगा कि यार अगर किसी आदमी को आप सशक्त कर देते हैं, एम्पावर कर देते हैं, उसके लिए किसी तरीके का रोजगार आप ढूंढ देते हैं, या उसको आप एम्प्लॉयबल बना देते हैं. इंस्टेड अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, अगर आप उसको एम्प्लॉयबल बनाते हैं. लाइक आई वाज अ इकोनॉमिक्स टीचर and I did everything in my schooling, my graduation, everything I did in economics. मेरा इकोनॉमिक्स का डिसेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं था. इकोनॉमिक्स का फैशन से, मल्टीमीडिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. बट जब मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स खत्म किया, पढ़ाई किया, तो ऑब्वियसली मेरे पास एक स्किल सेट था, और उस स्किल सेट के आधार पर मैं लोगों के पास अपना सीवी दे रहा था, इंटरव्यूज क्रैक कर रहा था. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव टू डू विद आवर चिल्ड्रन. हमें उनको वो स्किल सेट देने चाहिए ताकि कल वो बाजार में जाके जब खड़े हों, so people will understand, okay, this child, this person have a different skill which is in need of our company. मुझे क्या लगा, 2010 I'm telling you, 2010 most of the school in India, ma'am, they were doing what? Candle making, masala packaging, paper bag making, which was a big market in 70s. 70 के दशक में आप में से जो छोटे थे, आपके पेरेंट्स, आप सबको आई एम श्योर याद ही होगा कि तब बिजली चली जाती थी रोज अमूमन रात को. तो कैंडल वाज वन ऑफ द ग्रोसरी फॉर द फैमिली, और हर घर पे कैंडल होती थी, हर घर में केरोसिन होता था, हर घर में वो रात को लाइट या लैंप ऐसा कुछ जलाने के लिए रिसोर्स होते थे. छोटी छोटी दुकानों के अंदर आपको बड़े बड़े पेपर बैग्स नहीं मिलते थे, तो अखबार के लिफाफे बनाए जाते थे. बट द मार्केट वाज कोलैप्स. 2010 जब डिजिटल रिवोल्यूशन हो रहा था, हमें लगा कि यार आज की डेट में तो आप बिल फोन से जमा कर रहे हैं, पढ़ाई फोन से कर रहे हैं, आप टिकट फोन से जमा कर रहे हैं, पिक्चर आप फोन से देख रहे हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग थ्रू योर ओन डिवाइस. सो व्हाई कांट वी ट्रेन दिस पर्टिकुलर नॉलेज टू आवर चिल्ड्रन स्पेशली. और ये फिर हमने तैयार किया, दिस वाज कॉल्ड AEMP, एबिलिटी एनहांसमेंट मल्टीमीडिया प्रोग्राम. मैं बहुत कोशिश करूंगा कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि 14 साल की जर्नी को बताने लग गया तो आज पूरी रात बीत जाएगी. बट उस AEMP ने हमने क्या किया, वापस वहां गए YMCA, and I went back to Angelina ma'am that we had done a research, and this is what I believe, that these people can do this also. Yeah. Give us a try. See, give us a chance. We had no idea हम क्या करने वाले हैं. हमने चुपचाप अपना काम बड़ी शिद्दत से किया, and after 9 months we again went back to ma'am, thank you so much for this opportunity. We just wanted to know your opinion, that what change you have found. See that Rakesh, forget about skill, forget about employability, forget about market, whatever. What we realize is this is different. What she said to us, she said that lot of students, there is a lot of improvement in their attention, in their behavior, in their cognition, in their information processing, in their problem solving skills. They are starting taking interest on devices. They are in a real sense, they are using a use of the device. So, okay. She said that you should go to other schools. Then from one school to another, from YMCA to Muskan, from Muskan to Tamanna, then from Pillar to Post. We were here in Delhi only. Gradually, we realized that maybe something happening in Southern Band.
then in Bangalore, then in Hyderabad, then in Bombay. Today we are partnered with more than 250 institutions across the India and overseas, and 25,000 plus beneficiaries we have so far. And apart from India, फिर हम लोग UAE को लेकर गए. Recently last year हमें WHO की तरफ से किसी ने बोला कि आप एक international recognition होता है Zero Project Award करके. Why don't you apply for that? This is a revolutionary approach in India. We, with a small heart, we said, okay, ये सब तो fix होता है. हमने लिख दिया. Recently, AMP got a international recognition also through Zero Project Award. What I'm trying to tell you is, there is nothing is impossible. Nothing is impossible. When a person having no condition in family, having no interest from the beginning of the childhood or adolescent life, if a person having with a wonderful team, having with a common wavelength of people, if we can do that, why can't you? Most of the organizations are in India are ruling and running by the parents. अब वो होता क्या है उसमें एक इमोशन कॉर्नर भी आता है, समटाइम प्रोफेशनल कॉर्नर भी आता है. आज एक एम्प्लॉयमेंट की बात मुझे बोलने को बोला गया स्पेशली, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन एरियाज को टच करूं. एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, हमें तो एक ही बात समझ में आती है साधारण सी, क्या कि फरजाना मैम ने कोर्स किया, अब फरजाना मैम को एक्सचेंजर ने एम्प्लॉय कर लिया, दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, राइट? यही समझ में आता है. दिस इज नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट, दिस इज ओपन एम्प्लॉयमेंट. आई स्किल्ड हर and she is now started working at her home as a freelancer. This is also a employment. This is also one type of employment. This is self-employment. मैंने इनको skill set दिया. Now she has formed a group of people और एक group में काम कर रहे. This is also one sort of employment. This is supportive employment. ये transaction period डालने में मैम बहुत साल हमें लग गए. I'm telling you, since last 14 years, it was very tough to crack the mind of those people जो कई सालों से सिर्फ कैंडल्स बना रहे थे. बट मुझे बड़ा अचंभा लगता है ये जान के कि हम लोग ना कभी कभार एफर्ट करना बंद कर देते हैं. मेरे पास मैम मेंत्रा आप जानते हैं, राइट? मेंत्रा इन जेबोंग अभी तो एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता, बट टेक ओवर हो गया था. तो जेबोंग उस टाइम पे 2010, 8, 9, 10 के आसपास में नई कंपनी थी, और मेंत्रा के अंदर ये जो कपड़े होते हैं उनकी क्रॉपिंग की जाती है डिजाइन्स की, और उसके बाद उन डिजाइन्स को यू हैव टू पुट दोस डिजाइन इनटू द डिवाइस, तब जाकर लोग उसको खरीदते हैं पिक्चर देख के. एट टाइम आई वाज हैविंग अ लंच और डिनर विद सम ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम मेंत्रा एंड वी जस्ट हैड अ डायलॉग विद देम कि यार हमारे बच्चे तो बड़े अच्छे दिखते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी डिसेबिलिटी आप पता ही नहीं कर सकते, दे लुक्स वेरी नाइस, व्हाई डोंट यू गिव देम एन चांस, यू नो, कि वो आपके लिए मॉडलिंग करे. दे सेड ओके, आप मॉडल बनाओ. हमने 2015 में पहला फैशन शो किया दिल्ली में, उसको WWAD बोलते हैं. और वो WWAD से क्या हुआ दोस्तों, गुलफाम अहमद नाम का एक बच्चा है, अगर आप में से कुछ लोग इंटरनेट अच्छे से यूज करते हैं तो गुलफाम अहमद नाम का एक बच्चा है. He walked to the ramp for the first time in his life. He belongs to a very modest family. He has a polio condition and he was in crutches that time. You know, अब 2015 की फोटो खोलना और आज 2023 की फोटो खोलना. He is a TED Talk speaker, he is a Josh Talk speaker, he works for brands. Today, if you will call him to talk to your show, he'll charge somewhere around 35,000, 40,000. That fashion show has changed his life thoroughly. भाई ऐसा तो हमें भी लगा कुछ हो रहा है, हमें लगा let us try to give us another chance. हमने बेंगलोर में भी किया. आप में से कुछ लोग जो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं उन्होंने प्रणब बख्शी नाम के बच्चे का नाम जरूर सुना होगा. India's first autistic model. That guy worked for us for the first time in his life in Bangalore, again WWAD के second. देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये बातें. मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोलना चाह रहा that we have to limit on one area, that okay we have created a multimedia program, we wanted to limit on that. No, there are few who wanted to jump on some other area also. Probably they have no interest on these gadgets. They are very good, you know, fancy looking. They want to work on their attire and all. There is a model who's on spectrum. Which one? There is a model also. Yes. Autism. The people are doing a lot of things. प्रणब बख्शी क्या बात है, वही तो मैं बोल रहा हूँ. प्रणब is our student. He walked for first time in her fashion show. वहाँ से उसको strike मिला. See, imagine, this is what I'm trying to tell you. Employment doesn't mean that we have, हम किसी को सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं चलिए हमने आपके लिए नौकरी ढूंढ करेंगे. So this is, we are not a naukri.com or monsterjob.com. हमें ये समझना पड़ेगा, if
if we will enhance the skill set of somebody, if we will make employable to somebody, we will certainly get some opportunity in the market. आपको पता है मैंने मल्टीमीडिया वाला अपॉर्चुनिटी मैम इन 2010 पूनम नटराजन मैम नेशनल ट्रस्ट की चेयरपर्सन होती थी एंड उनके साथ मेरा बहुत एक डिस्कशन जो है डिबेट में कन्वर्ट हुआ, फिर वो हीट अप डिस्कशन पे गया. उस टाइम पे लव वर्मा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सेक्रेटरी होते थे. मैं बता रहा हूँ आपको, उन लोगों की जो पॉलिसीज बनाते हैं उन लोगों के साथ बहुत हीट अप डिस्कशन हुआ. They said, Rakesh, this is impossible in India. This is not possible. You don't know. This is not India. Just Delhi is not the India. I said, yes, I understand. But we have to start from somewhere. बॉस आज हम स्टार्ट करेंगे तब जाके गाजियाबाद तक पहुंचेंगे 2 साल के बाद, और तब जाके मेरठ पहुंचेंगे, और तब जाके हो सकता है वो अंदर जाके बदायूं और वगैरह सब पहुंचेंगे. बट अगर हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, बिकॉज फैशन इज फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो बॉटम टू टॉप नहीं जाता, तो हमें वहां शुरू करना पड़ेगा सो दैट पीपल स्टार्ट फॉलोइंग इट अप. एंड मल्टीमीडिया, आई एम टेलिंग यू दोस्तों, इज वर्ल्ड, आई मीन इन इंडिया मल्टीमीडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, और दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट आउटसोर्स इंडस्ट्री है इंडिया में. तो हमें लगा क्यों ना वैसे एरिया को पकड़े, इस एरिया के लिए काम करें, और इन्हीं सब पे काम करते करते देखिए ये एक ऐसा एरिया है. दिस इज क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो कोई लोग मुझसे जब पूछते हैं कि आप क्यों आए फिर भी, तो मैं बहुत इरिटेट होकर सबको एक जवाब देता हूँ, बस आई केम इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज आई रियलाइज्ड दिस इज an unorganized industry and there are a lot of scope to work on this. So मैं दोनों बातें आपको समझा रहा हूँ. पहले बोल चुका हूँ why you have to do as a parent, और अगर आप में से कोई ये सोचता है कि यार मेरे को तो मेरा करियर कैसे बनेगा, how I will make an economic of scale for this, I'm telling you a lot of work to do in this industry. This is an industry. Play school exist नहीं करते थे, आंगनवाड़ी हुआ करती थी आज से 40 साल पहले. Play school is a big market today. अगर हम कॉर्पोरेट और बच्चों यानी यूजर और गिवर्स के बीच का वो गैप अगर खत्म करने की सूझबूझ रखते हैं, आई थिंक इज इम्पॉसिबल. उन्हीं सबके साथ आजकल हम लोग स्कूल्स के लिए मैम करिकुलम सॉल्यूशंस दे रहे हैं, क्योंकि स्पेशल स्कूल्स में करिकुलम नहीं है, और मैक्सिमम आईपी के आसपास उनकी दुनिया शुरू होती है और आईपी के आसपास उनकी दुनिया खत्म हो जाती है. तो आई रियलाइज दैट हम कुछ ऐसा भी करें. तो आजकल एक करिकुलम सॉल्यूशन हमने आर्ट एंड डिजाइन के नाम का बनाया है, इसमें लगभग कुछ बेनिफिशियरीज हैं अभी. So anyway, in short, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, but everything is possible. Employment is not only about the open employment. There are self-supportive, freelancing, lot of things what we all can do, and there is an opportunity to create new areas in this. Thank you so much. We have so many examples like this. There was a child, 12 years old, who came, mother came to me to discuss the behavioral challenges. But then she showed me some of his creative artwork, the paintings that he used to make. And the paintings were so wonderful. She says, I put up a whole art gallery for my child, and his paintings get sold to the cost of 1 lakh rupees also. So that's something that she harnessed when she got to know that my child can paint that well. She harnessed it, and she promoted it to the extent of putting up a gallery and inviting people to look at them, people purchasing them, and is becoming a source of income for the child and so much motivation for the family that they could somewhere help his skill become a source of achievement and living for him. So similarly, as you said, giving them a skill which can help them get employment is what we need to keep thinking of, because as a parent we know our child the most. Who knows, your son becomes a car designer or an aircraft designer when he grows up, and it is one of the topmost industry if we look at that. एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग या स्पेसक्राफ्ट डिजाइनिंग या कार डिजाइनिंग, बिना हम कार की डिजाइन भी देखे तो कार भी नहीं खरीदते हैं कि ये कैसी लगती है, isn't it? So there are so many things that they can do. We have to think out of the box, and बहुत बार ये लीड्स पेरेंट्स के थ्रू ही आती है, क्योंकि उनका मोटिवेशन लेवल वे अहेड होता है, हम लोगों से भी ज्यादा होता है to do something. So we also look towards the parents to give us ideas. We look towards you
कि आप लोग अपने इनपुट्स दो, शेयर करो, आप लोग सब इतने हाईली ट्रेन्ड इंटेलिजेंट प्रोफेशनल्स हो कि कुछ चीजें आपके, कुछ स्किल सेट्स आपके होंगे जो हमारे अंदर नहीं है। शायद जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही है क्योंकि हमारे को नहीं आता है वो, और आप में से कोई होगा जिसका स्किल सेट बहुत हाई होगा उस एंड में। सो जब तक हम एक दूसरे के साथ पार्टनर करके काम नहीं करेंगे तब तक वी कांट bang things in the society and be able to bring a change. तो intentions हम सबकी सेम है पर कहीं कहीं डिस्कनेक्ट रह जाता है। सो हमें सबको कनेक्टेड होके विदाउट थिंकिंग कि हाँ प्रॉफिट लॉस बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दिस इज। We need to help our children become absorb, become independent, be a part of society. ये सिर्फ अगर आप बहुत लार्जर स्केल पे देखो तो आपके इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर इकोनॉमिक, इफ यू इम्प्लाई और अप्लाई द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ जाएगा अगर हम डिसेबिलिटी और मॉर्बिडिटी कम कर देंगे तो। सो दैट्स व्हाई अर्ली इंटरवेंशन भी साइंटिफिकली प्रूव करके इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि उन्होंने बोला दोस चिल्ड्रन हु गेट, आप जितना पैसा अर्ली इंटरवेंशन में खर्च करते हो अगर आप वो नहीं करेंगे और आप बाद में इंटरवेंशन शुरू करोगे तो कॉस्ट भी ज्यादा रहेगी, ड्यूरेशन भी लॉन्ग रहेगी और टोटल कॉस्ट एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा। दैट्स इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स। सो हमें वो सब चीजें जब आप सब एंगल से देखते हैं so then it becomes relevant that we work and help them become independent. I would like to add one example. जब आप बोल रहे थे ना पेरेंट्स के पार्टिसिपेशन के बारे में, आपसे बात करते करते एक पॉपअप मेरे दिमाग में है। बैंगलोर में there's one organization called Bubble Autism Center. All right. Yeah. So Bubble was our partner for implementing AEMP program in the campus. We had one batch, and there were obviously in a batch there were a couple of different students. There were 7-8 students in the batch, right? And when we do the partnership with the schools, it's called Social Alliance. And through the Social Alliance, we don't only train the children, we want the parents should also come forward. We want to give that recipe to you as well. What happened, out of the 6-7 parents, only one parent was so enthused. See, I wanted to add this example so that आप जब यहाँ से बाहर निकले आपको समझ में आए कि parent का role क्या है basically. So one of the parents, he was so enthused. Liz is her name. और वो क्लास में बैठती थी, बाकी लोग नहीं आते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, महीने में एक बार आते थे तो कभी 2 कंप्लेंट बच्चे की करते थे, कभी कुछ करते थे, चले जाते थे। Liz was quiet throughout the program. वो सिर्फ बच्चे को सिखा रही थी और खुद भी सीख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। सबका प्रोग्राम खत्म हुआ, एक दिन तो कोर्स खत्म ही होना होता है। One fine day there was a ceremony, everybody was clapping. Some of the people they said, okay, now we will do this. One of the parents said that we will migrate from Bangalore to other city. You know what Liz said? She said, I'll open a shop for my child. She opened a very small shop. Now that shop became a company, and that company name is Pumpkin Patch. And Pumpkin Patch is hiring these days so-called normal people like me. Everything is possible in this world. Everything. Similarly, another example. One family all the way from Dubai, I don't know how, they heard about us and they said, okay, we want you to come down to Delhi just for 10 days experience and we want you to get a feeler. And if you will like that, then after we'll think something. We said, okay, don't worry, come. They came all the way from Dubai, the whole family, huh? I mean, the younger ones who is under spectrum, his name is Josh. The eldest one, Stanley, other 3 members also, father, mother, young, elder brother, and the spectrum child, they all came. You know what used to happen when they used to come to our office? The whole family used to come. And our faculty, when he was teaching to the Josh, everyone in the family, they were quiet and they were learning. After 10 days, when they went back to Dubai, they called us back and they said, we want you to continue this program. We understood something. We said, okay. We continued. They continued it. Today, Josh runs a small company. It's called Josh Creative Box. See, everything is possible until unless if you have that conviction. Start giving that conviction. Yes. Perseverance. To keep teaching them. Keep Yes. teaching them. Yes. Don't lose that, oh, it's been 6 months. He's not started speaking his first Yes. word. He will. You have to continue with your efforts. Your efforts should never be less. Many IITians who crack, AI, EEE, JEE, lot many बेचारे अपनी पूरी जिंदगी पढ़ते रहते हैं, IIT में चले जाते हैं, IIT पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको इंजीनियर नहीं बनना होता। 4 साल लाखों रुपए देने के बाद वो फिर छोटा सा एक मोमोज का ठेला खोलते हैं
I don't know, आपने जाना है ऐसे कुछ लोगों ने आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत स्टोरीज हैं, बहुत स्टोरीज हैं ऐसी। पर पता है वो जो मोमोज बेचता है ना, जब वो तो खैर वो तो MBA ड्रॉप आउट था, बट जब आप वो IITM पढ़ के जब स्किल सेट लेके, इवन इफ यू आर सेलिंग अ मोमो ना, you will not sell momo like a street vendor. You will make it wow momo. Yes. All right. So I think parents' participation is very, very equally important. Keep positive yourself. Thank you. Will not break for any lunch or tea, any tea or snacks as of now, because we think we have just one session left to hold you, and that is our multidisciplinary team. We'll call our multidisciplinary team here, and we'll ask them a few common questions on how and what they can do to help us. And then after that session, we'll break for lunch, and then we are all free to talk to each other and discuss or ask questions or do things whatever we want to. There are a couple of stalls also we have put up where you can speak to our behavior therapist who will show you some visual cards. Then there's a small kit our occupational therapist has designed, which is a very simple and easy to make sensory kit, which you can carry when you are traveling to calm your child down. They will speak on all these small tips for you all. So stay back for another half an hour with us, and then we'll break for lunch straight away. So let's have 4 chairs here, and then so that they can be right in front. And then I'll invite our team members one by one. So first, I would like to invite Dr. Ashish. He's our occupational therapy in charge here in Noida and in many of our continuous kids center. He's our senior occupational therapist, and he will guide us with various soft skills and sensory small tips that we can carry back home to help our children calm down, settle down. Or if you have any one of you have any questions around some sensory issues or everyday health skills, you can ask him at the end of the session. Second, I would like to invite Vishal. Vishal is our team leader for applied behavior analysis, and he's got good leadership skills. He does evaluations and guides the team on the plans, the plan of action, how to teach, conducts training for our therapist on a regular basis. So he will be able to tell us what is the role of behavior management, and please start taking your seats. Uh, what is the role of behavior manager, because we at times don't know too much about these terms also. What is happening, how is it different from speech, or how is it different from doing an OT session? So let us ask them today. We'll ask them only to answer what they do and how is it different from each other. And then I would like to invite BK sir, BK Mishra sir. He's our speech language pathologist, very passion driven, and I've seen him for last 6-7 years from the inception of Continua. He was the first person who joined us, and his passion was huge, and his desire to learn and update himself was immense. And he went from in between 2-3 years to further get trained, get his degrees, and then again came back, and now he's our supervisor for our speech language therapy team and is doing his work with immense passion. His passion is what I really enjoy when I interact with him. We'll ask him some of the questions about things that we don't know, like what is AAC, what is artificial assistive communication, what are the challenges that our individuals or children with autism in teenage they experience when it comes to language, right? And lastly, let me invite our special educator in charge, Ms. Rashmi. She is very, what do I say, meticulous in planning her IEPs, her intervention plans, well documented work she does,
and also trains all the special educators and supervises them wherever they have. She handhold them whichever center they are working. So they all are very big and important pillars, and we'll ask them today. We'll grill them and ask them a lot of questions and find out how they can help our children and parents go through various challenges that they experience. So I have a list of questions for all of you. Okay. So my first question is for Vishal sir. Vishal sir, you have, because ABA is something which everybody is so confused about कि behavior therapy क्या होता है, applied behavior therapy क्या है, इसका क्या role है, क्या principles हैं, why do we have to talk about it, why do we have to know about it, what do we have to know, how is it different? So the first thing that I would want to touch upon is, Vishal sir, you please explain us what is ABA and what are its basic principles that the parents need to know. No, you can sit there and answer. Hello everyone. First of all, we need to understand what ABA means. It's applied behavior analysis. It's derived from behavior psychology, in which we are using the principle of behavior psychology to deal with the special needs kids, to teach them. ABA एक misconception है कि ABA से behavior से work करता है. It's not about behaviors only. I'm saying कि एक बच्चे का behavior is hitting, but you have to find out why is hitting. You have to find out the factors. Why hitting is occurring again and again. और उसका alternative solution क्या है? So in ABA we work on two things. First comes behavior identification. Second is language communication skills development. So ABA में we identify the behavior. कि behavior का like what's the reason for that behind that? What are the function of behavior? Yeah, it can be a tangible. The kid wants something, उसकी demands पूरी नहीं, इसलिए that's why he's frustrating. Or he has a sensory issues with something, or he has some attention behaviors. He wants to seek your attention, you are not paying attention on time, and then he shows tantrum. Usually happen with parents, everything is going fine. Suddenly kids start shouting, and they are not confused. What happened? In that case, you have to analyze the behavior's function first. As a ma'am ne kaha tha, there is kids has a hating behavior right now. So we have a term called antecedent behavior consequence. So always important to find out कि behavior का antecedent क्या होता है, कि what happened before the behavior. Because when we get alarm, everything is going fine, kids start shouting. When behavior goes on peak, तब alarm होते हैं कि what happened. But you have to find out कि behavior से happening से पहले क्या कर रहा था बच्चा. What he was doing something, or something irritates him, or he needs something from you. And then at behavior time, first thing is like to make him relax. If you try to explain, no, don't shout, don't scream, it's not going to work out. At the time of behavior, जितना explain करने की कोशिश करोगे, बच्चा उतना ही irritate होता है. First thing is make him relax. Either make him start like there's alternative way. Suppose a kid is crying. In that case, you ask him to stop crying, he'll not focus you. Find an alternative option. Make him busy with the counting. Like let's do counting. Or let's count the chairs. Or let's give a high five. So when you give a high five, it is giving a high five to you, उसका attention divert हो गया. Then may ask him, what do you want? When it is able to express in words, you'll get the idea. इसका function क्या था? And then work on that. Second thing is implementation. Like how to plan an intervention. We need know एक problem है, now how to work on it. So you have to use the techniques. We have like teaching technique, DDT, discrete teaching trial prayer, or you can work on differential reinforcement. Okay, how techniques can work, different techniques can work on the kids. Suppose, let's say example, a kid is very attention, he's attention seeker. Every time when mama is going, वो mama को follow करता रहता है, हर जगह, even washroom तक. So how to work on that? So teach him. First start from like attention आप पहले घर से stop करो. Usually parents does, they try to teach everywhere. For kids, आप उनको हर जगह नहीं सिखा सकते हो. You can't control them. As a parents, you try to every time to control them. First start from the home. Always start from a structured environment. In structured environment, you can control them. You can explain them. You can teach them. And from structured environment, move to the environment like natural environment, malls, parks.
और always try to work on the behaviors पहले यहाँ पे कम crowd होता है. It's not like कि आपने एक work किया, मैंने एक intervention plan design किया था बच्चे के लिए, it is working at home. Now let's try that model. वहाँ पे बच्चे का behavior different होगा. First try at a less crowded place and observe कि वहाँ पे क्या-क्या factors से which are more involved in. What are environmental factors which are affecting the behavior, and then work on that. And second thing is like behaviors kind. Behaviors are Yeah. I'm good with that. Then there's a term called differential reinforcement. What is that? Find out different ways to work on a behavior. It's not like that. Usually what happens, parents go to therapy centers, वहाँ observe करते हैं, एक बच्चा है, उसका therapist ये सिखा रहा है, and it's learning that. Why not my kid? Because आपकी बच्चे की learning अलग है, उसका cognition अलग है, उसकी understanding different है. So the technique which is working on one kid cannot work on second kid. So we can't compare them. In that case, we do try different methods. Let's suppose one method is working, I try something, method one, work किया, नहीं किया, leave it. Then usually what happens, it's not working. We got a complaint. जब आपने plan दिया था, it's not working. Now make an alternative plan ना. Why should we go for one plan? कि आपने एक ही plan पे आप dependent हो. Always keep a back-end plan. Yeah. So that to and fro communication from this, what we decipher is that you need to communicate. Okay, we try doing this, it is not working. Or am I doing it the right way? Do I need to change my method? Do I need to modify my method? Or do we need to change the strategy? So that communication, जैसे स्कूल में हमने बताया कि पेरेंट और टीचर का कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए. और पेरेंट या कहीं भी आप स्टक होते हैं तो रीच आउट टू दैट प्रोफेशनल. If I am the case manager as a developmental pediatrician, if I am the person who's connecting all the dots for you and you are somewhere getting lost, not understanding, reach out so that we can speak to everybody. What is the challenge? Where is the challenge? Get that fixed at every level and then work again. So hurdles, not just you, even we find hurdles sometimes. कि हम उसको ये skill सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, but he's not getting it. He's not coming out with it. What is that we are not doing right, or what is, because again it's a spectrum. Every child behaves differently. Every child is going. You have to find a new way to get their attention. But these are some of the scientifically researched method, tried and tested more, practiced more, have been shown to show result in following these strategies to teach children various things. So that is where the role of behavior therapy comes in. Now, for a very long time, sensory integration, occupational therapist role was not included in the standard practice guidelines which were prepared in America or any other country outside who were at that time more aware. But the moment the research started falling in place, the moment we had more research on integration, sensory integration, and how it can help children be more aligned and be able to learn more, the role of occupational therapy also got highlighted. And still, till date, we have less number of occupational therapy professionals to the number of children who need to be addressed. Till date, we also struggle to complete our teams in various places because we still have less trained professionals. So let us ask Ashish sir, what is the role of occupational therapists and how they can help our teenagers, adolescents in building those self-help skills which are very important for independent living. Very good afternoon to everyone. Myself Ashish. तो जैसे मैम का क्वेश्चन है कि what kind of self help skills go through that. तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल क्या होता है वहाँ पर? ऑक्यूपेशनल का रोल जो होता है, जैसे हम लोग जो वर्कआउट करते हैं, द बेसिक थ्री थिंग्स आर देयर, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, वर्क एंड लीजर. अगर हम सेल्फ हेल्प की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग टीनेजर्स में या फिर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए. दे आर फेसिंग दैट. फॉर एग्जांपल, दे आर नॉट एबल टू अप्लाई. जैसे मैं इडल की बात करता हूँ कि बच्चे नॉट एबल टू टेक बाथ प्रॉपरली और नॉट एबल टू, जैसे ब्रशिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट माई चाइल्ड इज नॉट एबल टू ब्रशिंग हिमसेल्फ. और व्हेन वी गो थ्रू दैट दे अवॉइड दैट ऑल्सो. तो आई थिंक फर्स्ट यू टू लर्न दैट कि व्हाई दे आर अवॉइडिंग दैट. Is there any issue with that, or they don't like that कि brushing what kind of activity is that? तो आप लोग वहाँ पर हल कर सकते हैं. पहले रिजॉल्व करो तो सेंसरी है या बिहेवियर या फिर एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इज देयर.
बट व्हेन यू रिजॉल्व दैट कि हाँ कि बच्चे का सेंसरी आ रहा, तो हम लोग एक डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। कुकिंग स्ट्रेटजी से हम लोग उसको खुद के ब्रशिंग प्रोटोकॉल सिखा सकते हैं। अगर ब्रश के ब्रिशल से वो कंफर्टेबल तो सॉफ्ट ब्रशेज यूज कर सकते हैं, वो आपके सेल्फ हेल्प स्किल्स में हेल्प करेगा। Also, there are some other self-help skills, जैसे buttoning, unbuttoning, bathing, changing their clothes, removing t-shirt, putting on a t-shirt, removing shoes, putting on shoes. Then handwriting skills. Handwriting skills. The moment a teenager is in school age group, they are expected to write, and their pencil grip may not be appropriate. They may be putting too much pressure, or it may be too light, or their strength is not adequate. So there also the role of an if you can tell a few activities that you make them do to help with their handwriting. हैंडराइटिंग के जैसे आप लोग बहुत से पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा हैंडराइटिंग नहीं कर रहा है, तो बिफोर गो थ्रू हैंडराइटिंग आप उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर जाए, आप लर्न ऑब्जर्व देम कि फ्रॉम वेयर दे गेट एनीथिंग। तो प्री राइटिंग स्किल्स एक्टिविटी के लिए बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट टू गो थ्रू दैट कि वो स्ट्रेंथ है कि नहीं है। इफ स्ट्रेंथ इज आल्सो अवेलेबल देन व्हाई नॉट गोइंग टू राइटिंग। तो आप वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या एनी इज देयर एनी वे टू लर्न देम। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज आर देयर। जैसे हम लोग ने पेरेंट्स कोशिश करते हैं जनरली पेंसिल ग्रिप के पास चले जाते हैं कि मतलब मेरा बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ रहा है या फिर समथिंग लाइक दैट, या फिर वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है। हम लोग सिंपल एक स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने शेविंग फोम को एक पॉलीथीन बैग में विजिबल कर दिया और वहाँ पर एक आपका एक विजुअल लर्निंग हो जाएगा, प्लस आप यहाँ पर इस तरह से जैसे ट्राई कर रहे हैं पेंसिल से या फिर फिंगर से ए बना रहे हो या फिर सी बना रहे हो, या फिर कुछ एनिमल्स पजल शेप्स लर्निंग कर सकते हैं आप। ये आपके हेल्प कर सकता है लर्निंग प्री राइटिंग स्किल्स में। Or at the same time, it's also sensorily very pleasing. If anyone wants to touch it, the first thing I liked about it was, oh, it's so soft. What is this? I want to play with this. So you know what? Texture-wise, it's attractive. Color-wise, it is attractive. They don't have to get into the stress of holding the pencil, and at the same time, their finger is making that alphabet on it. And they are also being able to recreate the alphabet which they are seeing in the book. Probably from there they will get the liking of being able to hold the pencil later on and start writing on a paper also. So this is, we don't directly jump onto holding the pencils, grippers पकड़ा दो, अब जबरदस्ती पकड़ के उनको लिखवा रहे हो, but you start with very basic things, very easy simple techniques to stimulate them or motivate them to interest them in those activities, right? That was interesting. So let me ask Rashmi ma'am, special education we all know, and remedial education role in managing our teenager children and in teaching them academic, pre-academic skills is huge. They play a lot of role in every school. We are always looking at special educator है कि नहीं जो इसका IEP बनाएगा या execute कर देगा plan को, या हमारे बच्चे के time to time academic needs को address करेगा कि नहीं. So ये सारे challenges, कौन से ऐसे common academic challenges that you find in our teenagers जो teenage में चले जाते हैं, middle school में होते हैं, आप ऐसे कौन से academic challenges experience करते हो जब वो आपके पास आते हैं, and how special educators can help in those addressing those challenges, because lot of times क्या होता है parents को पता नहीं चलता है कि हम special education क्यों ले, डॉक्टर ये तो इनको बच्चा तो ये कर लेता है, इसको तो आता है ये, why do we want to go to a special educator? So I want you to highlight the importance of what you do. Good afternoon, everyone. Myself, Rashmi. I'm a specialist in autism spectrum disorder. जैसे कि मैम का क्वेश्चन है कि हम लोग स्पेशल एजुकेटर्स की क्या हेल्प करते हैं बच्चों को, कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम ये तो A to Z कर लेता है, रीडिंग राइटिंग भी कर लेता है, लेकिन उसको क्या जरूरत है स्पेशल एजुकेशन की? स्पेशल एजुकेशन बेस्ड है स्ट्रक्चर्ड टीचिंग का, कि आप बच्चे को कुछ भी करा रहे हैं, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वो एक्टिविटी कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और आप वेट कर रहे हैं बच्चे के रिस्पॉन्स के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि बोलो A for apple, तो उसको आप बोलो कि बोलो A for apple, कि आप रिपीट कर रहे हो। वेट, हैव पेशेंस। तो आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वो चीज एनवायरनमेंट में जर्नलाइज हो रही है या नहीं हो रही है, इट मैटर्स अ लॉट। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का ट्यूशन भी लगा हुआ है, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, बच्चा हर चीज कर रहा है, बट सिर्फ टेबल टॉप तक कर रहा है। आपने बोला मैम्स को रेड कलर्स तो पता है, काउंटिंग भी पता है, बट उसे मीनिंगफुल काउंटिंग्स नहीं पता।
नंबर एंड वैल्यू नहीं पता। आपने बोला कि हम लोग घर के काम तो बच्चों से करवाते हैं, तो फिर घर में छोटे बच्चे होते हैं कि जाओ टमाटो लेकर आओ फ्रिज से, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है बट वो फ्लैश कार्ड में कर रहा है, ऑब्जेक्ट में नहीं कर पा रहा है। आपने बोला जाओ 2 टमाटोज लेकर आओ, कॉलीफ्लावर लेकर आओ, उसे समझ ही नहीं आ रही 2 का मतलब क्या है। तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि 2 का मतलब 2 ऑब्जेक्ट है, 1 and 2। एडिशन जब हम कराते हैं बच्चे को, हम देखते हैं कि मैम ये एडिशन भी कर लेता है, सब्ट्रैक्शन भी कर लेता है, लेकिन मैम ये ना यूज नहीं कर पाता शॉपिंग में, ये डेली लिविंग में यूज नहीं कर पाता। वी शुड क्लियर कि मेरा एम क्या है, मैं बच्चे को क्यों पढ़ा रहा हूँ या मैं क्यों पढ़ा रही हूँ। मुझे ये नहीं करना कि मुझे बच्चे को पढ़ा के आईएएस बनाना है, मुझे बच्चे को पढ़ा के हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब दिलवानी है और बहुत हाई क्लास की जॉब कराना है, नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन अभी के लिए टीनेजर बच्चा है, एडोलसेंस है, इतनी ही है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, डेली लिव, इतनी ही है। अगर मैं देखी बच्चा नंबर आइडेंटिफाई कर रहा है, लेटर्स कर रहा है, तो उसे क्यों ना रीडिंग पे लेकर आए। रीडिंग में क्या दिक्कत होती है कि मैम ये कर तो लेता है बट कुछ कुछ वर्ड ना ओमिट कर देता है। That is comes in learning disability, dyslexia. But learning disability इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होता till the age of 8। तो हम वो चीज स्किप करते हैं, साइड लाइन कर देते हैं कि मैम ने ये तो कर लेता है, ठीक है मैम सी बनाता है बट उल्टा। गुस्सा होगे, चिल्लाओगे बच्चे के ऊपर कि नहीं सीधा बनाओ, समझ में नहीं आता एक बार में। तो डिफिकल्टी बच्चे हमें कि हम बच्चे की डिफिकल्टी को नहीं समझ पा रहे हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। वेट करें, आप टेबल टॉप पे कुछ भी करा रहे हैं उसे जर्नलाइजेशन करवाएं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर चीज बच्चों को करवा देते हैं बट जर्नलाइज नहीं कराते हैं। थेरेपिस्ट ने बोला घर पे प्रैक्टिस करानी है आपको, तो आप टेबल टॉप पे ही करा दो, एनवायरमेंट में नहीं करा रहे। और ऑल टाइम से थेरेपिस्ट ने बोला मैम कलर्स करवा दिए मैंने, नंबर्स करवा दिए, एडिशन करवा दिए, आप भी ये घर पे करवाना। टेबल टॉप पे करवा रहे हैं, आप ऑलवेज ना कलर पूछ रहे हैं, बेटा मम्मा की फ्रेंड ने कौन सा कलर पहना है, मम्मा ने कौन सा पहना है। डोंट आस्क क्वेश्चंस। बच्चा इरिटेट हो जाता है, मुझसे पूछेंगे मैं भी इरिटेट हो जाऊंगी। लेट्स प्ले विद देम, हम पागल, लेट्स काउंट द प्लांट्स, लेट्स काउंट द ट्रीज। ये हमें क्या नाम है वोकैब यूज करनी चाहिए, वर्ड्स। यानी कि बच्चा हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर, फिर से क्वेश्चन आ गया। मम्मा के फ्रेंड मिली, मम्मा को राइम, फ्रेंड को राइम सुनाओ। लेट्स यू स्टार्ट ना, ऑलवेज बच्चा क्यों स्टार्ट करे। में कर तो है बट जो और बच्चे कर लेते ना वो ये नहीं कर पाता है। मुझे क्यों कंपेयर करना दूसरे बच्चे से, और अगर दूसरा बच्चा डिवाइड कर रहा है तो मेरा बच्चा करे, जरूरी नहीं ना। हाँ, मुझे जब इम्पोर्टेंट होगा कि जब उसको डेली रूटीन में स्टार्ट करना है वो चीज। बच्चा थोड़ा पीछे है लेकिन इंडिपेंडेंट करे, डिवाइड कर लेता है, एडिशन कर लेता है, रीडिंग राइटिंग अबाउट एवरीथिंग कर लेता है। बट मैम जब तक मैं बोलूंगी ना ये लिखेगा नहीं। मैम जब तक मैं वहां पर बैठी रहूंगी करता रहेगा, मैं हट जाऊंगी फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो ही बच्चे की लर्निंग है ना, एज पर माय ऑब्जर्वेशन, एज पर माय एक्सपीरियंस, मेरी नजरों में वो लर्निंग नहीं है। चाहे बच्चा 1 डिजिट सिंपल डिजिट एडिशन करे बट वो खुद से करे, आपको बार बार वर्बल प्रॉम्प्ट देने की जरूरत ना पड़े, आप वहां पे बैठे रहो उसकी जरूरत ना हो। इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया। देन बच्चा बड़ा हो रहा है कि मैम ये कर ले रहा है बट थोड़ा और स्लो चल रहा है, चलो इंडिपेंडेंट भी कर लिया। आप अपनी नीड बताओ स्कूल में एजुकेटर को कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो बच्चे के लिए। एजुकेटर तो जो स्कूल का करिकुलम चल रहा है वही फॉलो करवाएगा, हर कोई इतने एफर्ट्स स्कूल में नहीं मारता। सिंपल सी बात है, सैलरी मिल रही है, मैं 8 घंटे का जॉब कर रहा हूँ मैम, मेरा एफर्ट एक्स्ट्रा क्यों लगाऊं। हर कोई सेम नहीं होता, कोई कोई होता है जो एफर्ट्स मारता है बच्चे के लिए। करिकुलम को मॉडिफाई कराओ, बच्चे आधे घंटे में कर रहे हैं उसे 1 घंटा दो। उसका राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं लिख पा रहा, कंप्यूटर्स है, टैब है, आप उसमें एग्जाम ले लो। इस बच्चा राइटिंग में अच्छा नहीं है, वर्बली लेकिन बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है, आप वर्बली एग्जाम ले लो। ये तो कहीं क्राइटेरिया हम लोग ने फिक्स कर दिया है कि आपको रिटर्न में ही एग्जाम लेना है, पास करना जरूरी है। चाहे बच्चा 2 बार क्लास रिपीट करे बट इंडिपेंडेंटली सब कुछ करे और बच्चा उस चीज को डेली रूटीन में यूज करे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, आप रिस्पॉन्स का वेट करो। आप बच्चा अगर बोल रहा है, रुक कर बोल रहा है, रीइंफोर्सिंग। उसने अगर आपको पेंसिल भी उठा के दी, उसने 1 + 1 2 भी लिखा ना अपने आप से, रीइंफोर्सिंग
के बहुत अच्छा करो। ये सब तो हम सबके साथ भी है। मम्मा लोग घर में हम लोग को छोटी सी गलती कर देंगे, तुरंत डांट देंगे, लेकिन जहाँ पर मैंने बहुत अच्छा काम करा, हाँ ठीक है, हम भी बोलते हैं अच्छा मैंने गलती कर दी, आपको दिख गया, इतना सारा काम मैंने सुबह से किया, वो आपको ही दिखा। एप्रिशिएशन बहुत जरूरी है किसी के लिए, स्पेशल नीड, चाहे वो स्पेशल तो बाद में है, पहले तो वो बच्चा ही है। मैम ये बहुत जंपिंग कर रहा है, मैम ये लिखता तो है बट हंसता रहता है, ठीक है, हम भी मैम ना प्रॉपर ना कंसंट्रेशन नहीं दे रहा कॉपी में आधे घंटे, हम भी नहीं देते हैं, तो ठीक है, अगर वो 20 मिनट्स में दे रहा है कि आपके लिए अचीवमेंट है कि उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो वहाँ तो दूसरे बच्चों से अलग है और थोड़ी डिफिकल्टी है, इट्स टोटली फाइन, बट आप जो भी करें इन अ स्ट्रक्चर वे, कि अब मैम मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ, ये तो वहाँ पर जाके लेट जाता है मॉल में, मेरा शॉपिंग नहीं हो पाता, मुझे वापस लाना पड़ता है। जैसे कि मैम ने बताया, बच्चे को प्रिपेयर करो, विजुअली प्रिपेयर करो ना बच्चे को, बच्चे की ही फोटो क्लिक करके उसके शेड्यूल में डाल दो, आज संडे है या कैलेंडर बनाओ, मंथली, वीकली या पर डे के अकॉर्डिंग कि बच्चे की नीड क्या है। हर बच्चा अलग अलग तरह का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, सब सेम फॉलो नहीं करेगा। कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे का, मान लो बच्चा सीवियर है, मॉडरेट है, डिपेंड कि बच्चा ऑब्जेक्ट पर है कि बच्चा पिक्चर पर है, कि ठीक है आपको संडे को मैकडी मिलेगा, बट आपको संडे तक 7 टोकन्स अर्न करने हैं। अगर आप ये वाला गुड बिहेवियर करोगे, पेस्ट अ फोटो कि आपको ये करना है, देन यू विल अर्न 1 टोकन 1 स्माइल। तो वो रीइंफोर्समेंट हमारा भी ऐसे होता है, विंटर्स आ रहे हैं, हम लोग वेकेशन पे जाएंगे, फटाफट अपना ऑफिस का काम कंप्लीट कर ले, घर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट कर ले। तो रीइंफोर्समेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरह से, उसमें मेहनत लगती है, वो टाइम टेकन भी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप मंथली चार्ट बना दो, पिक्चर्स लगा दो डेट में कि 12 है, 12 को हम नानी हाउस जाएंगे, 20 को हमारा हेयर कट डे है, तो मॉर्निंग और बेड टाइम से पहले जब भी आप वो कराओ, बच्चे को पता हो कि देखो 12 को तो पापा का बर्थडे है, 13 को नानी हाउस जाएंगे, तो वो बच्चे का ना इंटरेस्ट बना रहेगा कि हाँ अच्छा आ रहा है, ऑटोमेटिकली और विद पिक्चर्स। कैलेंडर हमने भी लगा के रखा है। अभी पहले इनिशियल फेजेस में डिफिकल्टीज है, इनिशियल 3 to 5 इयर्स बहुत डिफिकल्टीज है, बट एक बार सेट हो जाता है, यस मैम, तो कैलेंडर वो अपने आप लिखता है, अपने आप उसको पता है हर चीज, And the child वो mentally date fix prepares करेगा, हर themselves, चीज no? अपने आप कर देता है। अच्छा ये कर रहा है, no matter whether I like it or not, अच्छा ये follow कर रहा है, हाँ It is in the routine and timetable here. yes, sooner or later they get used to it. बट कैलेंडर निकाल के, टाइम निकाल के उतना मेटिकुलस हो जाता है और अपने आप, बिकॉज़ दे आर वेरी, दे लाइक Structure. Schedule, structure, they like it. मैम ये चीज तो हम भी करें रूटीन में कि मेरी कॉन्फ्रेंस है 20 को, मुझे उस दिन क्या नाम है, हमारा भी अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है ना, वी आल्सो गेट दिस वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीक्यूटिव स्किल्स, ये हम इस तरह से बिल्ड करना शुरू करें, वो हर जगह लगती है, हर एक्टिविटी में लगती है, हर चीज में लगती है। हम भी लिखते हैं, बिना लिखे हमें भी चीजें याद नहीं आती है। When we have too many things to do, we do make a list. तो कुछ भी प्रेजेंट करो स्ट्रक्चर वे में और अपने अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ओटी और स्पेशल और कुछ भी हो, पूरी फील्ड में बच्चे के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट। अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है क्या करना है, बाकी एवरीवन विल गिव यू द आइडियाज एंड द टेक्निकल नॉलेज, लेकिन आपके बच्चे के लिए जो सही है वो आपको ही पता है और किसी को नहीं पता है, Right. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, Okay. यू हैव टू So आइडेंटिफाई। let's go to our next question. Thank you, Rashmi. That was very, very interesting, full of examples. So let we go to our next question. DK sir, please tell us what are the language challenges or different language problems that you come across when you were a teenager visiting you for language therapy or speech and language therapy. किस तरह के different problems आप experience करते हैं? In the field of ASD or whole ASD में ऑटिज्म के जो टीनेजर्स होते हैं वो किस तरह की लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? Hi everyone, my name is Baikunt Misra, speech language pathologist from Continua. So अभी Continua में हूँ तो Continua. So basically हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि टीन एज में उनको स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीच थेरेपिस्ट क्या करता है, लैंग्वेज थेरेपिस्ट क्या करता है, या कम्युनिकेशन थेरेपिस्ट क्या करता है, और स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन थेरेपिस्ट है कौन। बेसिकली हम जब कहीं जाते हैं तो देखते हैं स्पीच थेरेपिस्ट का बोर्ड लगा है, हमको लगता है कि स्पीच थेरेपिस्ट
सिर्फ और सिर्फ साउंड पर काम करता है। हमारा बच्चा अगर नहीं बोल रहा है तो हम जाएंगे स्पीच थेरेपिस्ट के पास और वो साउंड पर काम करना स्टार्ट करेगा। लाइक मिस आर्टिकुलेशन हो सकता है, लाइक वो उसने बोलना स्टार्ट नहीं किया है, हो सकता है साउंड डेवलपमेंट जो चार्ट आता है उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो हम स्पीच थेरेपिस्ट को चुनते हैं। और सिमिलरली दैट टाइम हम ये भी सोचते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट अलग होता है, लैंग्वेज थेरेपिस्ट अलग होता है, कम्युनिकेशन थेरेपिस्ट अलग होता है, क्योंकि हमको बताया गया है कि लैंग्वेज करना है तो लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो हम साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे, साइकोलॉजिस्ट काउंसिल करेगा, उसके बाद वो कहाँ भेजेगा तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास ही, क्योंकि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ही स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी एंड कम्युनिकेशन थेरेपी का काम करता है। तो अब हम बात करते हैं एएसडी की। सो बेसिकली एएसडी में प्रॉब्लम क्या होती है? सोशल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है। और दूसरी क्या होती है? सेंटेंस फॉर्मेशन। ऑब्वियसली अगर बच्चा बड़ा हो रहा है और सेंटेंस फॉर्मेशन उसकी अच्छी नहीं है तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो जब हम बात करते हैं कि उसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, इन सब एज के बच्चों में डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने को देखते हैं। सपोज मान लीजिए आपका बच्चा 5 साल का है और 5 इयर्स में उसने स्टार्ट किया बोलना, और वो इतना अच्छा बोलता है कि आप उसके सामने कुछ भी लाते हो, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एएसडी, आप उसके सामने कुछ भी लाते हो वो बहुत अच्छे से पढ़ता है उसको। आप जितनी बुक्स दोगे, जितनी पिक्चर्स दिखाओगे वो पढ़ेगा। बट अगर जब आप उससे बात करोगे उसके बारे में ना, सेंटेंस फॉर्मेशन वो नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, सर ये तो बोलता सब कुछ है, इसको सब कुछ आता है, बट ये सेंटेंस फॉर्मेशन हमको नहीं बताता। स्कूल गया था, हम पूछते हैं आज क्या खाना खाया, वो नहीं बताता, बट सर उसको पता है कि खाने में क्या मिला, मम्मी ने क्या दिया था। तो वहां पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है एएसडी बच्चे में। वो 5 साल का बच्चा है, आप ये नहीं बोल सकते कि उसको बोलना आ गया है तो अब वो सब कुछ जान गया है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है एएसडी के जो उसके डिसऑर्डर के टाइप्स हैं। सपोज अगर एएसडी ऑटिज्म की आप बात करते हो तो आपने देखा होगा माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, बॉर्डरलाइन एएसडी। अभी हमने यहाँ पे इतनी सारी चीजें देखी हैं, सुनी हैं, वो बहुत अच्छे मोटिवेशन भी हमने देखा। प्रणव की भी बात किया जो कि अभी रिसेंटली उसने रैंप वॉक किया है ना, आपको पता है उसका जो डिसऑर्डर्स निकल के आया है एएसडी का, वो क्या है? एनीवन नोज? डेफिनेटली वो बॉर्डर टू माइल्ड है, वो बॉर्डर लाइन टू माइल्ड ऑटिज्म जो है डायग्नोस हुआ है। अगर आप स्पीच थेरेपी से ये बोलो कि सर मेरा बच्चा 10 साल का हो गया और अभी तक उसने बोलना तो स्टार्ट कर दिया बट वो कम्युनिकेट नहीं करता, कोई भी हमारे घर पे आता है चला जाता है बट वो किसी से कुछ भी नहीं बोलता, तो इसका मीनिंग है कि उसको सही डायरेक्शन में लैंग्वेज का बेनिफिट नहीं मिल रहा। और उसके अकॉर्डिंग, जैसे सपोज मान लीजिए बच्चा मॉडरेट है तो आपको टीच भी मॉडरेट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब जैसे सपोज मान लीजिए टीनेज में बच्चा सबसे ज्यादा क्या करता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो रिपीटेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है उसको। ये मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है। अब हम 10 इयर्स टू 15 इयर्स सब मिला के देख रहे हैं, उसमें रिपीटेशंस बहुत आते हैं। अब रिपीटेशंस की अगर हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोलेलिया। सो इकोलेलिया भी 2 टाइप से होता है। आपने देखा होगा इमीडिएट होता है और डिलेड होता है। सो जब आप बच्चे को थेरेपिस्ट के पास ला रहे हो, आपको भी ये पता होना चाहिए कि इमीडिएट इकोलेलिया क्या है, डिलेड इकोलेलिया क्या है, या हाउ टू टीच इमीडिएट इकोलेलिया, डिलेड इकोलेलिया। जैसे इमीडिएट क्या होता है, बच्चा पहले सपोज आपने पूछा आप क्या कर रहे हो, उसको पता है कि मैं पानी पी रहा हूं, बट वो इमीडिएट इकोलेलिया में बच्चा क्या करेगा, आप क्या कर रहे हो पहले बोलेगा फिर आंसर करेगा, पानी पी रहा हूं। डिलेड इकोलेलिया में क्या होता है, जो भी हम बताते हैं या वो जो देखता है, जो सीखता है, वो बाद में खुद से बोलता है। तो हमको लगता है ये किसी टॉपिक पर बात कर रहा था, आज मैं घर गई तो ये बोल रहा था कि सपोज वो कार पर बोल सकता है या किसी अपने थेरेपिस्ट का नाम लेकर बोल सकता है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बोल सकता है। सो हम ये फेस करते हैं कि डिलेड इकोलेलिया और इमीडिएट इकोलेलिया में जो बच्चा होता है वो उसको टीच करने के लिए थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है।
क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर आपको डिफरेंट फ्लैश कार्ड बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी सेट करनी पड़ती है, जो कि पेरेंट्स घर पे ज्यादा टाइम तक करते हैं। स्पीच थेरेपी एक ऐसी चीज है जिसमें थेरेपिस्ट से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का होता है। जब भी हम चैलेंजेस फेस करते हैं तो हम पेरेंट्स को बताते हैं। बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट, मैं ये जानता हूं कि मैं बच्चे के साथ 40 मिनट्स 50 मिनट्स हाफ एन आवर या 1 घंटे काम कर सकता हूं, बट पेरेंट्स उसके साथ 23 आवर्स हैं। अगर हमारे 1 घंटे को निकाल दिया जाए, 23 आवर्स में से अगर बच्चा 10 घंटे भी सो रहा है तो आपके पास 13 घंटे बचे हैं। 13 आवर्स में आप उसको ये देख सकते हो कि करना कैसे, जो कि आपको आपके स्पीच थेरेपिस्ट ने, आपके लैंग्वेज थेरेपिस्ट ने बताया है। तो बेसिकली हमने बहुत ज्यादा रिपीटिशंस के केस में हम फेस किया। अगर उसके बाद हम बात करें इकोलेरिया भी 2 टाइप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्नोज करो। अगर आप एएसडी के टाइप्स में पूछोगे तो इकोलेरिया का सबसे ज्यादा परसेंटेज मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज्म में देखने को मिलता है। अब अगर स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हमारे पास बच्चा आता है, मैम अगर डायग्नोज कर रही है एससीडी और बच्चे में इकोलेरिया देख रहा है, तो आप डेफिनेटली ये मान के चलो ये बच्चा आगे चल के एएसडी होगा ही होगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो। बट मैम ने क्यों डायग्नोज किया? बिकॉज बिफोर 3 इयर्स वो हमारे पास हो सकता है, हमारे पास आया हो, उसके अकॉर्डिंग मैम ने बताया। बट जब हम स्पीच लैंग्वेज की बात करेंगे तो इकोलेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमको कैसे ट्रीट करना है ये स्पीच थेरेपिस्ट के बताने के अनुसार करना पड़ता है। अब दूसरी बात करते हैं जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो है नैरो इंटरेक्शन। अगर आप इस पर ध्यान दो तो आपने देखा होगा आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर एक चीज में बहुत शार्प है। अगर एज मैम सेड कि उसको कार के बारे में, ग्राफिक के बारे में बहुत नॉलेज है, तो आप सोचो अगर उसको ग्राफिक के बारे में नॉलेज है तो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ग्राफिक के बारे में, वो क्रिकेट के बारे में भी जान रहा है, बट हो सकता है कि वो हमारे सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उस बात को नहीं बोले, वो नहीं बताए। उसको पता तो सब है, बट अगर आप पूछने जाओगे ना वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। बट अगर उसको अकेले में टाइम मिल रहा है वो उस काम को डेफिनेटली बहुत फाइन तरीके से करेगा। तो हमने इस चीज को भी फेस किया है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है जो कि एएसडी में अक्सर देखने को मिलती है। अगर हम उसमें बात करें तो एक आपने एक और कंडीशन देखी होगी जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कन्वर्सेशन। मतलब बच्चा टीनेज में है, 13, 14, 15 इयर्स का है, बट वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। अब यहाँ नहीं करने की बात हो रही है, उसको वर्बल कम्युनिकेशन आ गया है, मतलब उसको पता है, वो बोलता है, हर चीज के लिए बोलता है हेलो हाय बाय। बट अगर आप उससे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो और चीज उससे बहुत दूर है, सपोज आपने पूछा कि फैन का है, तो कभी भी बच्चा दूर के फैन को ऐसे करके फैन नहीं बता रहा। टीन एज की बात कर रहा हूँ, वो उसको बोलने तो आ गया फैन, वो फैन है, बट वो उस टाइम पॉइंट नहीं कर रहा। पॉइंट की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने को देखने को मिलती है। Basically combined. Exactly. Non-verbal and verbal combined together. Yes. With joint attention. Yes. Being able to get your attention. You can say eye hand coordination. But अगर टीनेज में देखें तो वहाँ पे नॉन वर्बल कन्वर्सेशन की बात होती है, मतलब बिना अपने आप को कुछ बोले एक्सप्रेस करना। वो चीज नहीं हो पाता उस बच्चे में। तो ये चैलेंजेस हम फेस करते हैं एएसडी में जब टीनेज होता है या चिल्ड्रन होते हैं बच्चे। Right. So let us come to some next question. No problem, ma'am. Okay, you want to speak more? Yes. Yes, please go ahead. Complete your answer. It is complete. Complete. If you want to So I'll ask my next question again to Ashish and ask him to demonstrate some of those attractive sensory materials which parents can use to calm their child down, or maybe carry in the form of a small sensory kit when they are traveling, so that if the child gets suddenly disrupted या वो irritable हो गया है या किसी चीज से वो meltdown की तरफ जा रहा है irritate होके, तो उसको वो कैसे calm down कर सकते हैं। एक ऐसा छोटा सा sensory kit, instead of offering them mobile phones, they can carry a small sensory kit for the child of all age groups to just help them knowingly कि उसको क्या need है, किस चीज से वो settle होता है, उसको वो देने से वो settle हो जाएगा, calm हो जाएगा, relaxed कर सकता है अपने आप को। So sir, please explain how all these interesting items can be used for calming your child. सबसे पहले हम लोग जितने भी पेरेंट्स थेरेपी ले रहे हैं
जो भी सेंटर पे आके थेरेपी लेते हैं, तो दे आर वरीड अबाउट दैट कि सर हम लोग को यहाँ जाना जाए या ना जाए, ट्रैवलिंग करे या ना करे, कि बच्चा अगर 10 दिन में थेरेपी बंद हो जाएगी तो मेरा बच्चा परेशान तो नहीं रहेगा, हम लोग बैग तो नहीं चले जाएंगे यहाँ पर। तो हमेशा पेरेंट्स इसलिए से परेशान रहते हैं। तो एक ईजी किट है, आप जब भी ट्रैवलिंग करो तो पहले जैसे सर ने बताया कि हम लोग पहले उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, हर एक चीज़ को प्रिटेंड करके बता दें कि हम लोग को वाइल वी आर गोइंग या विजुअल शेड्यूल बना सकते हैं यहाँ पर कि ऑन 12th ऑन 23rd वी आर गोइंग फॉर ट्रैवलिंग, और किस चीज़ से जा रहे हो, तो ट्रेन से जा रहे हो या बाइक प्लेन या जिससे भी जा रहे हो उनको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, तो उनके माइंड में सेटअप हो जाए कि वी आर गोइंग फॉर ट्रैवलिंग और समथिंग लाइक मूविंग एंड फ्रॉम एनीवेयर टू अदर प्लेस। बहुत से पेरेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि जैसे मेरा बच्चा जैसे जो रूम को लेकर काफ़ी परेशान रहता है, वो अपने रूम के अलावा दूसरे रूम भी सोना पसंद नहीं करता है, तो वहाँ पर कुछ एक सेंसरी किट है जब लोग ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हो, और जैसा कहीं भी और अदर प्लेस में स्टे करो तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल एक सेंसरी ब्रश है। आई थिंक आप लोग को सोचा अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग है तो आप लोग को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कि मैं ब्रशिंग क्यों कराऊँ, लेकिन आप प्ले मोड पे थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों के हाथों पे जो टेक्टाइल डिफेंसिव बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा टिक के बैठ नहीं रहे हैं, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं जैसे एयरपोर्ट पे मेरा बच्चा भाग रहा है या प्लेटफॉर्म पे बच्चा इधर से भाग रहा है, तो वहाँ पर आप ब्रशिंग दे करके बच्चे को काम डाउन कर सकते हैं। देन ब्रशिंग के बाद कुछ जॉइंट कंप्रेशन टेक्निक्स होती है, जैसे बहुत से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को पता होगा यहाँ पर कि हम लोग फिंगर को प्रेशर देते हैं या फिर उनको जॉइंट को कंप्रेस करते हैं हैंड्स को, वहाँ पर आप हेड मसाज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हेड प्रेशर हो गया तो ये थ्रू आउट ट्रैवलिंग कर सकते हैं। देन अगर उससे बच्चा भी इरिटेट हो गया, आपको टच अवॉइड कर रहा है यहाँ पर कि मेरा बच्चा टच अवॉइड करता है, तो आप सो बबल प्ले कर सकते हैं कुछ, या फिर स्ट्रॉ लेकर आप साथ में चले तो कुछ चीज़ें हैं स्ट्रॉ से ब्लो कर सकते हैं यहाँ पर। क्लोथ पिन भी आप साथ में रख सकते हैं एक किट में, जैसे कुछ प्रेशर सीख कर रहा है कोई बच्चा, बहुत हमेशा मतलब कुछ ना अपने हैंड को प्रेस करता रहता है, तो आप टिप ऑफ द टो पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा वो काम डाउन होगा। काम डाउन स्ट्रेटजीज है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। फिर जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा ब्लो करता है कुछ चीज़ें, जैसे मुंह से कोई साउंड्स निकाल रहा है, कोई हमिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो पार्टी ब्लोअर्स यूज कर सकते हैं। ये जी, आई लव दिस, मैं सब पेरेंट्स Do को like बोलते हैं ये कैरी करने के लिए, विसल कैरी करने के लिए, ओरोमोटर स्टिमुलेशन भी हो रही है साथ-साथ। स्टिमुलेशन में प्लस बच्चा बहुत प्रेशर सीख कर रहा है तो थेरापुटी भी साथ में कैरी कर सकते हैं। तो थेरापुटी जो एक होता है कामिंग स्ट्रेटजीज होता है, बच्चा प्रेशर भी सीख करेगा और उससे कुछ ना कुछ इंगेज रहेगा। मैक्सिमम कामों का क्या होता है, बच्चे को इंगेज रखना है, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर होटल में स्टे कर रहे हैं, कुछ भी जो चीजें हैं ऐसे लगा। एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम किसी का कोई क्वेश्चन है फ्रॉम आवर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अराउंड सेंसरी इशू कि उसको कैसे करें हम? My son is fear of the nail cutting. My son has Nail cutting. He's now 14 years, but does not want to cut his nails. So Tactile defensive I know है it's not sensory because her teacher can cut his nails, but from I cannot cut his nail, and nobody in my home cut his nail. So maybe he's developed a fixation कि ये काम यही इंसान करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। But how can I deal with it? I'm struggling. So that becomes a behavior issue. That's his issue, है ना? More than sensory. Even he can tell. देखिए, one thing I want to say that कि just go through work simplification. There is technique we call work simplification. आप ये नोटिस करो बच्चा क्यों आपसे अवॉइड कर रहा है। आप डायरेक्ट उसके पास नेल कटर लेके जा रहे हो या फिर आपके साथ बस आपको नेल कट करना, आपका एक टारगेट आपने ऑलरेडी सेट कर रखा है कि मुझे नेल कट करना है, लेकिन आपको बच्चे की स्टडी में वाई इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पर एक ये आपका है, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं क्लोथ पिन से, उसके फिंगर्स पे नेल से थोड़ा सा प्रेशर दो, तो वो थोड़ा सा उसको वार्म अप करे कि हाँ मुझे इससे प्ले करना। फिर देन आप म्यूजिक स्टडीज यूज कर सकते हैं वहाँ पर बच्चे के साथ कि थ्रू म्यूजिक। और आप फिंगर को जब भी होल्ड करो ना, ऐसा नहीं टाइटली आप होल्ड करो, पहले उसको एक्सप्लेन करो कि तुझे प्रेशर दे रहा हो या फिर चीज़ें नेल पॉलिश कुछ भी, मतलब जो अट्रैक्टिव हो सके, जो उसको अटेंशन दे वहाँ पर। देन गो थ्रू नेल कटिंग। आप फाइलर यूज कर सकते हो और उसके बाद आप खुद एक एग्जांपल भी मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। बट अब तो ऐसा हो गया कि टीचर है तो कट करा लेगा ऐसे हाथ लेकर, और मतलब उसे पता है कि यहाँ पे तो मेरी चलेगी। Then he's made it as a fixation. Fixation and behavior also. चलेगी तो मैं ये sensory नहीं है, ये fixation बनाया है उसने। It's a fixated behavior, restricted pattern. Can I just intervene here? Actually, my son also has the similar problem of nail cut till now. So उसको भी same problem है। वो टीचर का भी नहीं, उसको कटवाना ही नहीं है। So what I used to do when he sleeps and everything, then I cut. Recently, I have also started. अभी मैंने उसको actually fear है।
एक्चुअली कुछ नहीं, उसको कट जाएगा. That is Yes. so I am trying that तुम खुद काटो, देखो कुछ होता है. तो he slowly he is cutting. अभी तो इतने अच्छे से पैर का खुद ही काट लेता है. मतलब पहले you have to बैंडेड उंडेड रख दिया मैंने, सब कुछ रख दिया कि कट होगा तो बैंडेड लगा देंगे, कुछ नहीं होता. With medicine is everything. I tell him that mama is doctor, nothing will happen. You cut. So I am here to help you. So when once he cut one nail, he got the confidence that कुछ नहीं होगा. तो धीरे धीरे मतलब वही मैंने पहले भी बोला, आइडेंटिफाई हमें करना है, सोल्यूशन भी हमारा ही निकालना है. And break down कर दिया task को, as he said, break. और आप यहाँ पर ये सोचो कि मुझे 5 fingers के थंब से एक साथ नेल कट करने हैं. 2 nails काट लो, 2 nails बाद में काटेंगे. Desensitization also है इसमें. अटेंशन दिमाग में बैठ गया, नेल कटर सामने आया और मुझे चिल्लाना है, तो desensitization कुछ देर यहाँ रखकर प्ले वे में इन्वॉल्व रखा. तो सीजर भी हो सकता है, तो सीजर में Scissor इसे use करके देख छोटा वाला. Or what you can do is every time you cut your nails, you say, okay, I just want you to see. I'm not cutting your nails. Just see, I'm cutting my nails. Best thing is like artificial nails are easily available. Do a mold. या role play करो पहले. Cut mama's nail. Artificial one. They'll understand. Safe है. बट वो अपना नहीं करता. And then आप उसको काटने दो. ब्लड आ जाएगा या ऐसा. उसको खुद काटने दो. यार है कि मेरे मतलब ये हथियार है जो मतलब मेरे चले जाए. and then it's like आपने पास में try किया और forcefully cut it. But there has been always a history in past. तो मैं कभी कर ही नहीं सकती. Just उसका fear Try किया होगा ना. Try किया होगा. Tension here. अपने घर में सोते हुए नेल काटना पड़ता है क्योंकि अब आप उसी को बोलो, since he is 14, you tell him you can try cutting. एक ही काटो चाहे, पर खुद से काट के देखो. ठीक है, as she said. And वही consistent. And वो independence भी आ जाती है. इसी के साथ में वो independent भी हो जाता है. Isn't it? वही हर चीज में थोड़ा सा बस सिलेबस Yeah, please. पूछिए. I have a question related to special education. How do you actually identify that at what age the special education can be started for a child when she is ready for initiating for a special educator sessions or with the academic sessions? Right. Not only with the age, but how do I understand as a parent that now it's the right time to introduce for this therapy? Okay, so I'll tell you one thing. If we don't have all these specialists here who are sitting in Gurgaon or Noida, there may be places where there will be only special educators. Yeah. And special educator curriculum includes training them with everything. From early intervention to, am I right? Yes, ma'am. And especially special educator curriculum has curriculum that includes training them in language also, training them with self-help skills also, training them to be completely independent. जो हमारे Indian government ने इसलिए अभी तक special education के colleges ही बनाए हैं सबसे ज़्यादा government colleges, so that they can be equipped and trained to do everything that a child needs to be trained in. Now, because we are having so many different specialities who can help us in a niche way in addressing different issues, we use that facility in an appropriate way so that हमारे बच्चों के outcome faster आए, जल्दी आए और एक ही बंदे के पास 100 टारगेट्स ना हो, डिवाइड हो जाते हैं टारगेट्स. भाई ये टारगेट्स इन्होंने ले लिए, वो लैंग्वेज के उन्होंने ले लिए. अब कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, एकेडमिक्स वो फिर स्पेशल एजुकेटर के पास. इसीलिए आज के टाइम में स्पेशल एजुकेटर जब आप सिटीज में रहते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते हैं थोड़ा सा देरी में स्टार्ट होता है. नहीं तो दे कैन स्टार्ट डूइंग अर्ली इंटरवेंशन आल्सो. 1.5-2 साल के बच्चे का भी कर सकते हो, 2 साल का तो कर ही सकते हो. 2 years से they can start working with a child. But because we have, अच्छा चलो पहले हाइपर एक्टिविटी कम करते हैं, सेंसरी इश्यूज अलाइन कर देते हैं, नहीं तो उसका एफर्ट डबल लगेगा. उसको भी पहले इन्हीं चैलेंजेस पे काम करना पड़ेगा. Because we have it here, but if you go to periphery where we don't have, the special educator will be made to do everything. They have to. Their curriculum includes this. उनके करिकुलम में सब सिखाया जाता है. ठीक है. सो ऐसा नहीं है. हम स्पेशल एजुकेटर की हेल्प अब ज्यादा एकेडमिक, सेल्फ लर्निंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जैसे उसने राइटली एक एग्जांपल दिया कि हमने बोला 2 बॉटल्स लेके आओ. अब बच्चे को 2 नंबर तो समझ में आता है, ये 2 है, बुक में पिक्चर में रीड भी करना आता है, काउंट भी करना आता है, शायद 1 2 ये भी कर देगा. बट जहाँ आपको एक्चुअल रियल लाइफ में उसका इम्प्लीकेशन चाहिए कि हमें 2 बॉटल ला के दो, वहाँ उसको नहीं समझ में आया क्या बोला है ना. सो दैट थिंग they will teach in a different way, change the method, but give them that reasoning, that capacity to comprehend and use it in real life scenario. That education that we are taking, जिसको हम education कहते हैं, academic कहते हैं,
लर्निंग जिसको हम बोलते हैं ना, उसको हम रियल लाइफ में यूज करने के लिए तो पढ़ते लिखते हैं ना। हम स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उस नॉलेज को रियल लाइफ में यूज करना है। So that part they will follow different methods to teach the child to use that knowledge, academic skills, उनका application होगा। So that is why it depends where you are, what kind of a facility, support system you have, उसके आधार पे decide किया जाता है कि कब हम special education services introduce करें बच्चे को, right? Understand that they have niche skills to actually take care of all these things which fall into their portfolio. Yeah. The only question that I'm having is, as a parent, how do I decide that it's the right time to introduce for special education therapy? Because my child is already undergoing through occupational therapy, already going through speech therapy and behavioral therapy. Now, when is the right time? Shall Okay, I so understand age is important. बच्चे का स्किल सेट क्या है और आपका मोटिव क्या है? अगर आपका बच्चा 3 साल का या 4 साल का है और आपका बच्चा बोलना शुरू कर दिया है, सिटिंग टॉलरेंस अच्छा है उसका, you want that now he should get school ready completely, and you want that अच्छा ये स्कूल जाएगी तो क्या ये कर लेगी, टेबल कुर्सी पे बैठी टीचर की बात ले लेगी, या 10-4 बच्चे बैठे हैं तो क्या ये कर लेगी, is she school ready? So then special educator का रोल आता है, अच्छा you look into all the aspects and make the child school ready in every field. So वहाँ स्कूल रेडीनेस आ जाती है। अब स्कूल जाने लग गया है बच्चा, एकेडमिक्स आगे भाग रहा है, बच्चा पीछे रह रहा है, तो वहाँ पे भी उनका रोल आ जाता है कि हेल्प द चाइल्ड कैच अप विद द कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स। सो ये बच्चे का लेवल क्या है, उसकी डेवलपमेंटल एज कैसी है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कैसी है, उसका स्किल सेट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा 5 साल का हो सकता है पर उसकी डेवलपमेंटल एज अगर 3 साल की है, उसका स्किल सेट 3 साल का है, तो हमें उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि अब हम कौन से थेरेपिस्ट की हेल्प लें। अगर आप नहीं डिसाइड कर पाते हो तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो डिसाइड करने में कि आप ये थेरेपी ऐड करो, दिस विल हेल्प यू, दिस विल नॉट हेल्प यू, रीच आउट टू अस। दैट इज व्हाई तो हम अवेलेबल है आपके लिए। तो जहाँ नहीं अवेलेबल है वहाँ पे हम डेवलपमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। एक, बच्चे की डेवलपमेंटल एज के हिसाब से उसकी एक्टिविटी प्लान होनी चाहिए, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से नहीं। क्रोनोलॉजिकल एज मींस उसकी एक्चुअल बर्थ से जो एज है, डेवलपमेंटल एज मींस उसकी डेवलपमेंट कितनी एज की है। तो 6 साल का है पर उसकी डेवलपमेंट 4 साल के स्किल्स है, तो आप 4 साल से ही स्टार्ट करोगे उसको 6 इयर्स तक ले जाना। आप सीधे 6 इयर्स की रीडिंग उसको नहीं इंट्रोड्यूस कर दोगे, है ना। सो दैट वी नीड टू डिसाइड देयर कि अच्छा अब हम इन पर्टिकुलर प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। हमारा बच्चा रेडी है, बोलने लग गया है, और या प्रोबेबली थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, स्पीच थेरेपी चल रहा है, बट अब हम इसे स्कूल में डालना चाहते हैं, तो लेट्स स्टार्ट with that school readiness also for the child. तो फिर special educator का रोल आ जाता है। Thanks. One more addition to this point only. What if the child is not speaking, even though the speech therapies are going on, but identification is happening, occupational therapy is happening, which is making the child calm, and then the sensory चलो issues सर, are आपका next question है already actually, so our next question for our speech language therapist is that if the child is not speaking, as you said, he has started understanding, he's following commands, he's able to identify things, basics, but he's not yet started to speak, और हम उसे communication आप कैसे कराएं? और assisted communication जो है वो किस एज पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इंडिकेटर होना चाहिए उसका, और क्या वो कहीं ना कहीं, बहुत बार पेरेंट्स के दिमाग में ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि एसी स्टार्ट किया मतलब तो बोलेगा ही नहीं, है ना। बहुत बार ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि सम अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन इज बेटर देन नॉट कम्युनिकेटिंग, इट विल रिलीव देयर एंजाइटी एंड दे मे स्टार्ट टॉकिंग, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप इनको बताओ, और अगर नहीं बोलता तो किस एज तक स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प कर सकते हैं वोकलाइजेशन? Okay, so at that time we can start AAC. So you know about AAC now. AC is stands for augmentative and alternative communication. अगर हम आपके बच्चे की बात करें, सपोज आप जिस बच्चे की बात करें उसकी एज क्या है? 5 years. ठीक है. After 5 years, before 5 years, it doesn't matter. It is important कि बच्चा अपनी चीजों को जो अंडरस्टैंड किया है उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। एसी यूज करने का सबसे अच्छा टाइम वही होता है जब बच्चा खुद को अंडरस्टैंड करता है, बट अपने फ्रस्ट्रेशन, मतलब क्योंकि वो बोल तो पा नहीं रहा है तो क्या करता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है, तो अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए या अपनी स्मॉल नीड को पूरी करने के लिए
हम एएसी का यूज करते हैं। अगर स्पीच थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है, आपने 1 2 3 इयर्स तक स्पीच थेरेपी लिया है बट स्पीच नहीं आ रहा है, तो हम एएसी स्टार्ट कर सकते हैं। अब एएसी में क्या होता है, एक्चुअली जो हम नॉर्मल स्पीच थेरेपी देते हैं उस टाइम हम बच्चे के डिफरेंट वे के अकॉर्डिंग, मतलब अपने थेरेपिस्ट के डिफरेंट वे के अकॉर्डिंग थेरेपी देते हैं। स्पीच थेरेपी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड है, जो अभी बहुत ज्यादा चलता है, प्लेइंग एक्टिविटी। सो प्लेइंग एक्टिविटी में अगर हम बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं तो वो स्पीच बोलने के लिए ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। बट अगर एज बढ़ रही है और बच्चे में स्पीच नहीं आ रही है, बट हाँ आपने देखा है कि आपके बच्चे में लैंग्वेज है, दैट इज नॉन वर्बल, इट डजंट मैटर, बट अगर लैंग्वेज आ रही है, आपने देखा कि वो अंडरस्टैंड चीजों को कर रहा है, तो आप एसी स्टार्ट कर सकते हो। अब बेसिकली एसी भी बहुत सारे टाइप्स में आता है, जैसे लो टेक, हाई टेक, और एक रेयरली देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं मिड टेक में। सो एसी अगर आप लो टेक की बात कर रहे हो तो लो टेक में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है जो कि आपके बच्चे के लिए कौन सा सुटेबल है। बेसिकली अगर हम लो टेक की बात करते हैं तो ज्यादातर लो टेक हम टीन एज में यूज करते हैं। अगर बच्चा मे भी हो सकता है एडोलेसेंस में हम उसको 8 इयर्स में 10 इयर्स में भी यूज कर सकते हैं, बट लो टेक एएसी का बेसिक पार्ट होता है कि जो उसके अंदर इतने टाइम से वो बोल नहीं पा रहा बट लैंग्वेज आ चुकी है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, और उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर नहीं आ पा रहा। एक्चुअली बोलने की वजह से अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके लिए हम लो टेक एएसी का यूज करते हैं। अब लो टेक एएसी डिवाइसेस में क्या क्या आता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा साइन लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज तो अभी इस टाइम एएसडी बच्चों के लिए स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग में बोल नहीं रहा तो साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जेस्चर्स यूज कर सकते हैं, पिक्चर बोर्ड कम्युनिकेशन बुक्स बना सकते हैं, जिसमें आप खुद से बुक बनाओ जो कि आपके बच्चे, जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया ए फॉर एप्पल, तो यही नहीं टीच करना ए फॉर एप्पल, हो सकता है आपका बच्चा बोलने के लिए वर्बली बहुत अच्छा हो, वोकलाइजेशन में। तो जैसे अब वोकलाइजेशन की बात करते हैं, बच्चा स्टार्टिंग में बाइलेबल साउंड सीखता है, पापा पापा मा, और आ ई ऊ उसको आराम से आता है, तो ए फॉर आम भी बताओ ना आप। यहाँ एसी इसी का काम करता है। पिक्चर बोर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, पेरेंट्स खुद से उन वर्ड को, उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जो कि बच्चा पहले से जान रहा है, जो कि बच्चा उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो हम उसको टीच करने की कोशिश करते हैं। वहां पर भी इन सारी चीजों में आप लैंग्वेज, जब हम लोटेक की बात करते हैं तो आप लैंग्वेज डेवलप कर रहे हो, कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हो, बट स्पीच भी स्मॉल थिंग के लिए डेवलप होती है जब हम उसको साउंड्स के बारे में बताते हैं। अगर हम हाईटेक एएसी की बात करें, हाईटेक एएसी डिवाइसेस में, उसमें हम बेसिकली हम 5 इयर्स में स्टार्ट कर देते हैं एएसी। जब हम हाईटेक की बात करते हैं बेसिकली उस टाइम हम ये देखते हैं कि बच्चा स्पीच भी आ गई है उसकी, सपोज जैसे उसने कुछ स्टार्ट किया वर्बल, उसने बोलना स्टार्ट किया आ ई ऊ, उसने ये भी बोलना स्टार्ट किया मम्मा पापा, या उसने ये भी बोलना स्टार्ट किया दे दो, और वो नीड बेस है, मतलब जब उसको नीड है वो तभी बोल रहा है। तो इस टाइम हम क्या करते हैं, हाईटेक जो डिवाइसेस आ रहे हैं अभी एएसी के, उनके लिए डिफरेंट अलग अलग डिवाइसेस के साथ एप्स आते हैं। अब जैसे अब एक मान लीजिए हमने यूज करना सकते टच चैट, तो टच चैट ऐप से आप अपने बच्चे को स्पीच बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो। उसके लिए आपको एएसी का डिवाइस लेना पड़ता है। अभी बेसिकली आप उसको लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं या टैब में यूज कर सकते हैं, फोन के भी बहुत छोटे छोटे प्रोलॉग 2 प्रो करके आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। प्रोलॉग इज वेरी एक्सपेंसिव, बट आवाज जो इंडिया का प्रोग्राम है बनाया हुआ है, हाँ वो इट इज लाइक 200 रुपीस का यस यस, हाँ वी कैन यूज। So the cost of prologue that he's saying is one of the first and the most advanced, but it is expensive. Yes. Annual cost उसकी 25-30 हजार चली जाती है। उसके बाद आपको ऐप भी लेना है। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग अब अगर आपने सपोज आपके बच्चे को कुछ भी स्टार्टिंग की स्पीच सिखानी है, स्पीच या लैंग्वेज, तो अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन की बात नहीं करके सिर्फ साउंड की बात करो, मीन सिर्फ वर्ड की, क्योंकि मेरे बच्चे ने तो अभी वर्ड भी बोलना स्टार्ट नहीं किया, तो हम सबसे पहले ऑब्वियसली अगर आप स्पीच थेरेपिस्ट से मिल चुके हो तो उसने बता दिया होगा कि सबसे पहले साउंड आएगा, फिर उसके बाद वर्ड आएंगे, फिर फ्रेजेस आएंगे, सेंटेंस आएगा, उसके बाद कॉमन सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे। तो अगर बच्चे में साउंड्स आना स्टार्ट हुआ है तो हम उसको ऑब्वियसली वर्ड टीच करेंगे, वर्ड बताएंगे। तो जब आप हाईटेक यूज करते हो तो उसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने डिस्प्ले पर हाईटेक एसी के डिवाइस को लगा दिया,
अब अगर आप उसको टीच कर रहे हो तो पहला काम होता है आप सारे डिस्प्ले में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको ऑफ हाइड मोड पर रखोगे, सिर्फ एक डिवाइस दिखना चाहिए। अब हम टच चैट की बात कर रहे हैं, तो मॉडल जब हम उसको दिखाते हैं, सपोज हमको टीच करना ईटिंग, अब हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि ईटिंग, अगर उसको भूख लग रही है या फिर कहीं वो देख रहा है उसको खाना है तो ईटिंग कैसे बोलना है। तो इसमें जब आप ए से स्टार्ट करोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ए से स्टार्ट करो तो आप ये नहीं सोच सकते कि इसने तो अभी ई एफ जी एच या ट इसने बोलना स्टार्ट नहीं किया। एक्चुअली एएसडी बच्चों में ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको साउंड डेवलपमेंट स्टार्टिंग से नहीं सिखाना पड़ता। आपने मतलब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि थोड़े टाइम के बाद आपका बच्चा अचानक से बोलना स्टार्ट करता है और सब कुछ बोलता है और कभी कभी तो सेंटेंस बोल देता है और आप सोचते हैं अचानक से ये कैसे हो गया, बट आप पर्टिकुलर उसी सेंटेंस से निकाल कर किसी वर्ड को बुलवाते हो तो नहीं बोलता, नॉट इवन अंडरस्टैंड कि हम जो मैंने बोला उसकी मीनिंग क्या है। तो जब आप एएससी में इस चीज को टीच कर रहे हो और मॉडल दिखा रहे हो तो उस टाइम हम बच्चे को उसी चीज को दिखाते हैं। इवन अगर इफ योर चाइल्ड इज अवेयर आप उसके हैंड को, फिंगर को उस डिस्प्ले पर टच करोगे, जैसे ही आप उसको टच करोगे उसमें से साउंड आएगा ईटिंग, और जैसे ही साउंड आएगा आप उसको दिखाओगे। ऐसा मैम, ये वन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक बार करने से नहीं होगा, आपको ये चीज आपको रिपीट करना पड़ेगा। ऐसे आप ऐसे टारगेट ले सकते हो, जैसे सपोज आपने 10 वर्ड के टारगेट लिए and what I will recommend here is के take help from professionals. You exactly. may not be able to understand how to use AAC. मुझे भी नहीं बहुत समझ में आता था, मैंने खुद डाउनलोड किया, सब्सक्रिप्शन लिया, गुड है, it's a good है। और उसमें बहुत बार आप अपने बच्चे अपनी सेंटेंसेस भी बना लेते हैं, पिक्चर जोड़ के, वर्ड जोड़ के, मुझे बर्गर खाना है, तो they'll make burger। मैम इसको कंप्लीट होने के बाद अभी हुआ नहीं, जल्दी करो, they are all hungry now, I can see that। किसी ऐप के रिलेटेड है। Yes, so yes. I'm just asking Okay. कि इस एज में हम लोग ये ऐप उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं क्योंकि उसको आइडेंटिफिकेशन है 14 years, your child is 14 years। Exactly. everything but Yes. expressive नहीं है। हाँ तो ठीक है। अब जैसे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, आपने पूछा ना उसको करा सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करो। सपोज आप डिस्प्ले के पास बच्चे को ले गए, अब आप उसको टच कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद टच करना पड़ेगा। आप ये देखो कि वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं। अगर आपका बच्चा उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है या थेरेपिस्ट ने बताया है जो कि प्रोफेशनल काम ही कर रहा है उस पर, तो आप अपने बच्चे का वो चीज स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपने बच्चे को स्क्रीन टाइम देना बंद भी कर दिया है तब भी अगर उसको फोन मिलता है तो ऑटोमेटिक वो लेता है, खोलता है और चलाना स्टार्ट करता है। ऐसे बच्चों के लिए एसी बहुत इजी है और वो कर सकते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसे खेलते हुआ he could be mature हो गया, but even if there is not a single meaningful word or a single meaningful sound is coming, अगर बच्चा एप्पल को देखे ऐप भी खोलता है तो भी समझ में आता है कि चलो उसमें मीनिंगफुल हो गया। यस, बट अभी मीनिंगफुल एक भी वर्ड नहीं है। Only चबाता है खाना, फीडिंग इश्यूज तो नहीं है साथ में, फीडिंग प्रॉब्लम्स तो फीडिंग का इशू नहीं है, बट सकिंग और वो है। तो ओरोमोटर भी चाहिए, बहुत बार जब ओरोमोटर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीच नहीं आता है। और अगर आप ये बात कर रहे हो जिसको नॉन मीनिंगफुल साउंड्स बोलते हैं, जैसा आपने बोला ना वो कुछ भी बोलता है, इसको सेल्फ टॉक में नॉन मीनिंगफुल साउंड बोलते हैं। इस टाइम बच्चे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उसको वोकलाइजेशन सिखाना स्टार्ट करो, और वो भी आपकी कंडीशन में, मतलब आपको वो फॉलो करे। सिमिलरली सपोज जैसे आपने उसको सिखाया आ, ई, उ, ए, अब ऐसे साउंड अगर आप उसको सिखा रहे हो और उस टाइम आपके सामने भी वो बोल रहा है, तब तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब उसके साउंड्स जो होंगे। So low motivation है probably, ये behavior भी हो सकता है। Exactly. यहाँ पे ये भी help कर सकते हैं। Suppose when she is vocalizing, what are you trying कि आप ट्राई करें कि वो मुझे vocalize करे। Instead of doing that, when she is vocalizing, आप उसको कॉपी करो and start adding your words in between. It's called a behavior momentum. जैसे वो बा कर रहे हैं तो बोलो हाँ, you can do modeling and all. आपका टारगेट है, आपका टारगेट ए साउंड है, she is vocalizing o I, say o I a, started learning. मतलब start focus, paying attention to your that time. Yes, और पर्टिकुलर जो साउंड आप सिखाना चाहते हो आपका फोकस होना चाहिए कि आप इस साउंड को ही
किसी भी मेथड से इन अ डिफरेंट मेथड आप उसको यूज करना स्टार्ट करो। एक्चुअली एएसी में ये भी है कि अगर आप साउंड भी सिखाना स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी प्राइमरी आप प्रोफेशन की हेल्प लो और वहां से वो स्टार्ट करते हैं। इसीलिए सिमिलरली जब आपने स्पीच थेरेपी स्टार्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो थेरेपिस्ट है उसने सबसे पहले आपके बच्चे को वर्ड या साउंड नहीं बताया होगा, उसने सबसे पहले आपको ये बोला होगा कि आप बच्चे को ये सिखाओ कि कैट सेज, डॉग सेज मींस कि उनके साउंड जो कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है, लाइक जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया या एनिमल्स हो गए, उनके साउंड्स पहले बताना स्टार्ट करो, जो कि नॉन वर्बल सॉरी जो सेल्फ टॉक में आ सकता है, नॉन मीनिंगफुल हो सकते हैं, बट आप पर्टिकुलर बार बार अगर दिखा रहे हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें अच्छी हो रही है तो दे कैन रिकॉग्नाइज। Ask cards, even if you ask general things also, there was no instruction following. There was no instruction following at all. Now even the basic instructions are at least happening. If I say, so somewhere receptive language is getting better. That is why she's following the instruction. और receptive language ही पहले आती है expressive आने के पहले. Absolutely. So she is slowly getting better. Yeah, absolutely. I agree to that. And identification has also improved. Earlier, if she was able to identify only five things, now she is able to identify 100 things. I would say in last 1 year. So receptively तो बच्चा better हो रहा है और expressively थोड़ा सा oral motor भी करना चाहिए. I think because अगर blowing, sucking और oral motor muscles weak है तो oral motor exercises is very important. You can use speech gear kit. उससे भी बच्चे का बहुत अच्छा oral motor exercises हो सकता है. उसके बाद वो sound. ठीक है sir. I know you have lot of things to tell them. And yes, Z-Vibe. You can use Z-Vibe. But I think everybody is turning hungry, so we will. किसी का कोई specific question, I will take up that. Otherwise, abort it here and open the lunch, so that everyone. जो भी grandson है, हाँ जी, please. बड़ों से communicate करना चाहता है, but he does not know how to do it. How to do it, right? So आप उनको you want to say something? So मैम वो कितने साल का है? 5.5. 5.5. So basically वो बड़ों से कम्युनिकेट करना चाहता है, बट आपने देखा होगा जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना उस टाइम वो उस चीज को कम्युनिकेशन के वे में नहीं लेना चाहता, वो अपनी चीजों को बताना चाह रहा होगा। मतलब वो पहले अपनी चीजों को बताना चाह रहा होगा, जैसे आप कुछ बोलना चाह रहे हो ना उस पर रिस्पॉन्ड दिए बिना, क्वेश्चनिंग की बात करते हैं, अगर वो 5.5 में है तो ऐसी चीजों में सबसे पहले आप बच्चे की वोकैबुलरी पर काम करो, जो आप कहना चाह रहे हो, जो आप बताना चाह रहे हो, आप एएसी यूज कर सकते हो इन अ सेंटेंस वे, जैसे छोटे छोटे पिक्चर लगाना। छोड़ दो, अगर बच्चा बोल रहा है तो लेट हिम नहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग करता है चीजें, उस टाइम भी में बात कर रहे हैं हेलो हाय उसे नहीं पता बोलता है, वो phrases use करता है। In that case, what happens like usually when you meet any kids, so what usually happens, we ask them lots of questions. There are typing, we are going to new place, कोई नए बच्चे से मिलता है, usually what happens like hello, how are you, कैसे हो, वो बच्चों को, छोटे बच्चों को देखता है, उसे हक करना है, पकड़ के जबरदस्ती करता है। But we ask at that time we ask lot of questions starting, so always avoid questioning in the starting phase. पहला जाओ, start playing. Give some time. आपने hello किया, give him a time gap, and then start interacting. What happens usually? अब आए, we have anxiety. कोई भी third person मिलता है, they ask me lots of questions, so I start avoiding that situation. नहीं ऐसी बात नहीं है, lots of कोई अनजान आदमी आया घर पे जैसे देखो, और उससे वो उसके पास जाएगा, उसकी गोद में जाके बैठेगा, फिर उसे बुलाने की कोशिश करता है, बट जो दूसरा पर्सन है उसको वो रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा है। That's pinch किया, कभी इंजेक्शन लगाना है इसके, मतलब इस टाइप का बिहेवियर। Basically, he's trying to seek attention from an adult because he wants to initiate an interaction, but somewhere adult is not able to reciprocate in the right way. So it is a mistake of the adult, I think. We should somewhere be prepared. At least बच्चा हमारी attention के लिए किसने attempt कर रहा है, हमें उसको एक attention तो देना चाहिए। अगर हम अपने ही मस्त हैं तो फिर क्या मतलब है? आपसे वर्ड्स लो, ऑलरेडी उसके पास वोकैबुलरी है, बट गिव हिम प्रॉपर प्रॉम्प्ट हाउ टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन। क्या बोलो, क्या बोलना है आपको, स्टार्ट इनिशिएटिंग इट। वो बताते हैं, आप पूछो हेलो आंटी आप कैसे हो। हाँ, तो आप जैसे ये प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, ये आप करते रहिए, धीरे-धीरे he will know it. Start with like one question, then add on 2, 3, 4, but at a time, one by one. वन थिंग ये एक बार तो एक सेंटेंस बोलते हैं। हाँ, तो सिमिलरली मैम जब आप बोलता भी है कई बार, ऐसी बात नहीं बोलता, पर उसके नेक्स्ट कुछ नहीं।
कोई बात नहीं, आप उनको प्रैक्टिस कराएंगे ना, धीरे धीरे ही रीच देयर। एक स्पीडिंग की बहुत आदत है, वो उसको कभी रोक दो, स्पीडिंग नहीं करनी तो ज्यादा करेगा। So, वो तो है ही, Behavioral that's a issues. behavior issue. Because that is trying to avoid that situation. अवॉइड भी बहुत करती हूँ। Spitting is hitting, pinching, सबसे common behavior भी है। करता था, वो काफी कम हो See, चुका है। he is trying to get your attention, Attention, and the moment you say, he gets it. Attention seeker है, मेरा मोबाइल लेके जाएगा और नीचे फेंकेगा, और मेरे को पकड़ के और फिर आप कहोगे नहीं, ये नहीं करना है। So the moment you say, छोड़ दिया है, आप नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, don't say no. Best thing. Avoid giving attention. Avoid giving attention. And When teach he's him doing, alternative communication. How to take a positive attention. अगर आपको किसी की attention चाहिए, teach him what, because usually they don't have vocabulary. उनके vocabulary में words नहीं होते, like mama look, mama देखो, मैंने क्या किया, excuse me. Teach those kinds of vocabulary words to them. How to take a positive, like touch करके, पहले touch, take eye contact, and then say. Okay, now when I touch his shoulder, he's looking at me, he's giving me attention. That's a positive way of taking attention. And then give him vocabulary कि आपको क्या बोलना है, क्या चाहिए. उसके से क्या उसका behavior modify होगा from negative to positive attention seeking. नहीं ऐसे होता है, कई बार कुछ पूछते हैं, जैसे पहली बार में आंसर नहीं देगा, टच करके ऐसे मुंह ऊपर करके बोलते हैं तो आंसर दे देगा। Yeah, vocabulary actually. Yeah, वही बस. We have to modify the behavior from negative to positive. जब वो गलत काम करता है तब आप उसे ज्यादा ध्यान ना देके अवॉइड करेंगे। अवॉइड करती हूँ मैं, रूम से बाहर चली जाती हूँ। हाँ, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा वो बिहेवियर। पर अगर आप उसको कहोगे नो ये नहीं करना है, तो उसको इमीडिएट अटेंशन आपको मिल गया, वो बिहेवियर रीइंफोर्स हो गया, वो अगली बार और ज्यादा करेगा। सिमिलरली मैम आप उसके सामने मॉडलिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप जो वो कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं है और आप अवॉइड कर रहे हैं, सिमिलरली सेम चीज आप 2-3 लोगों के साथ और बैठे हो पेरेंट्स के साथ और सिंपल वैसी ही गलती करें, आपको बताने की कोशिश करें, आप उनको टीच कर सकते हैं। उस टाइम भी आपको वोकैबुलरी की जरूरत पड़ेगी और कम्युनिकेशन की टीम का होना जरूरी है। आप उसके साथ 3-4 लोगों के साथ मॉडलिंग के साथ काम करना स्टार्ट। या सो जनरलाइजेशन में वो हेल्प करेगा, मॉडलिंग में। दोनों जगह सुन रही थी मम्मी का क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने बताया जैसे 2 बॉटल्स नहीं लेके आनी, मतलब वो नहीं लेके आता, उसको वैसे पता है 2 है। यही जब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, वो मतलब बोलती हूँ ये चीज मैं पेबल्स वगैरह उसको कटोरी में डालने के लिए जैसे बोलती हूँ 2 डालो 3 डालो 4 डालो, वो डालता ही जाएगा 2 3 4 5 6। वो उसको पता नहीं वे टू स्टॉप, हाथ भी पकड़ती हूँ उसका, अब नहीं बस फिनिश, तो कहने पे फिनिश कर देगा बट वो कंटिन्यूअसली वैसे डालता ही है। मैम उसको स्टॉप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। हम जितना नंबर बोल रहे हैं ना 1, उसको 1 ही प्रेजेंट करना है ऑब्जेक्ट, ये 2 देना ही नहीं है। जब वो 1 में 1 डालेगा मैं 2 भी रखूंगी साथ में, पेबल डालूंगी थोड़ा दूर रखूंगी, पहले पूरा फिजिकली प्रॉम्प्ट दूंगी, देन मैं वर्बल प्रॉम्प्ट पे आऊंगी, फिर मैं दोनों चीज फेड कर दूंगी, क्या नाम है ग्रेजुअली। तो ऐसे स्टॉप कॉन्सेप्ट इसको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है हर चीज में, सिर्फ उसी टाइम नहीं। रोटी खा रहा है 1 चपाती, वो 1 चपाती ही आप प्लेट में रखिए, तो आपको लगे कि हाँ 1 समझ में आ रहा है, सिर्फ ये 1 होता है, फिर आप दूसरी रखिए बट थोड़ी दूसरी प्लेट में थोड़ा दूर। तो ऐसे करके आप क्या नाम है उसे इनिशिएट करिए, फिर धीरे धीरे आप उसको रोटी को क्लोज लाते रहिए, पेबल्स को भी क्लोज, ऐसे करिए। Okay, so your thing was कि बार-बार खाना खाने जाता है। How old is your child? How old? कितना बड़ा है बच्चा? 2 साल 2 महीने का। तो सबसे पहले डीवॉर्मिंग करो। मैम वो करी थी। वॉर्मिंग डीवॉर्मिंग हो जाएगा, कभी-कभी they want to eat। और दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा माउथ सिर्फ खा रहे हैं, जेन्युइनली खा रहे हैं, पेट भरने के लिए खा रहे हैं कि सिर्फ मुंह में डालना है। हर चीज का टेस्ट देता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रिज खोल के मतलब किचन में ही घूमते रहता है, मतलब बहुत ज्यादा। तो वो भी कर रहा होगा, टच भी ले रहा होगा, लिकिंग कर रहा होगा, माउलिंग कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। टाइम जैसे ना उसको फिक्स कर हाँ, सकते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम, दिस इज स्नैक्स टाइम, दिस इज लंच टाइम, इन बिटवीन नो फोन। ये इनफोर्स करने से शायद धीरे धीरे वो समझ में आ जाए। टाइम फिक्स कर दो, डीवॉर्मिंग करो सबसे पहले। और अगर फिर भी ढूंढता रहता है आयरन सप्लीमेंट कब दिया है पता नहीं मुझे, अगर हाँ आयरन सप्लीमेंट्स भी तो एनीमिक होता है बच्चा, तो भी थोड़ा सा और वर्म्स होते हैं पेट में, तो ये सब भी होता है। और उसको फिक्स टाइम दे दीजिए, दिस इज ब्रेकफास्ट टाइम 9 उसके बाद हाइड कर दो सब कुछ, अवेलेबल ही नहीं है। हाँ छुपा दो, फ्रिज को ताला लगा दो, आउट ऑफ साइट, थोड़ी देर में बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स, इसका लिड ओपन अगर
things in those boxes वो open ना कर पाए. He can take it. कंट्रोल के लिए आएगा pick कर लेगा. निकाल ऑफर दे देगा. यहाँ पे बिस्किट है तो हाथ खींच के वापस लेके जाएगा. But is he really eating it or just taking texture या कुछ experience कर रहे हैं? पूरा अच्छे से खा रहा है फिर एक इक्वली प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं दोनों हाँ वो होती है जब लैंग्वेज आ रही होती तब भी होती है स्टार्ट होती है जब जब कम्युनिकेशन लैंग्वेज बच्चा सीखता है तो इक्वली स्टार्ट होता है and we'll open the house for lunch सब लोग खाना खाओ और फिर साथ साथ इनका थोड़ा थोड़ा questions के साथ you can continue bombarding them with the questions. There are many more here जिनको आप bombard कर सकते हो questions से. But let's start having our lunch also. Thank you everyone. Thank you so much for those who have come here. We are very very grateful to you that आप आए. हमने एक छोटा सा प्रोग्राम करने की कोशिश की ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा knowledge spread कर सके, आपके questions understand कर सके. And thank you all once again for coming here. Can we have a photograph of you? Very good learning experience for me, everyone. Yeah.